And where is it charging? Oh, it wants to charge. Do I have the power? Okay, battery also. Let's use the battery. 2 minutes on 14 ready. Where's we find the camera view? We find the angle.
of same birds and Exactly. lots of the same birds. It's already live? Oh, I see. That's pretty cool. That's on Facebook. No, you. It's YouTube. Premium करना है ना, so that when you come in like waiting, premium starting soon. Okay, I'll get it for you. Send the details. His name, that's it. And here's your passport number. Krishna
जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री श्रीमद गोविंद स्वामी शिल गुरुदेव की जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री श्रीमद His Divine Grace Srila A.C. Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada ki Jai Vishnupad Paramahamsa Rajagacharya Shri Srimad His Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Srila Prabhupada ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki Namacharya Srila Haridas Thakur ki Vamsikoho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Dvaita Giradha Shri Vasari Shri Gaura Bhakta Vrinda ki Jai Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Shamakund Radhakund Giri Govardhan ki Shri Vrindavan Dham ki Shri Mayapur Navadvip Dham ki Shri Kshetra Jagannath Puri Dham ki Ganga Maya ki, Jamuna Maya ki, Bhakti Devi ki, Tulasi Maharani ki, Shri Shri Gaurnitai ki, Shri Shri Krishna Balaram ki, Shri Jagannath Baladev Lady Subhadra Devi ki, Shri Shri Radha Gopinath ki, Shri Shri Radha Gopal Ju ki, Shri Shri Radha Madhava ki, Samaveda Bhakta Vrinda ki, Glory to the Son of the Lord. All glories to the Son of the Lord. All glories to the Son of the Lord. All glories to Shri Guru Shri Guru. Hare Krishna. I was trying to take a nap and सोने का प्रयास कर रहा था it was impossible. तो मैं सो नहीं पाया लेकिन I'm just joking. Very enthusiastic kirtan. बहुत ही उत्साहपूर्वक कीर्तन किया It beats the traffic from Calcutta. कलकत्ता से जब ट्रैफिक खेल कर आए उसके आप मात दे दिए So everyone's doing good. सभी अच्छे हैं You're alive, अब जिंदा है alive and well, जिंदा है और surviving or thriving. तो जीवित है या प्रयास भी कर रहे हैं Are you just surviving or are you thriving? बस जीवित जिंदा बचे हैं या आगे भी प्रयास कर रहे हैं That's a very interesting ये question. बहुत ही दिलचस्प सवाल है So I made sure that I didn't erase anything tonight. तो मैंने आज सुनिश्चित किया कि आज मैं कुछ भी मिटाऊंगा नहीं गलती से We discussed many interesting topics last night. पिछले रात दिलचस्प विषयों पे बात की We tried to relate the questions to the reality of what's happening in our world. जो भी प्रश्न पूछे गए उनको हमने वास्तविक जीवन में जो हो रहा है उनके साथ जोड़ने का प्रयास किया And I think for the simple devotees from the village, they found it to be very interesting. मुझे लगता है जो सरल भक्त है गांव से उनको ये बहुत ही दिलचस्प लगी ये बातें And maybe that was interesting for you to try to translate that to them. और मुझे लगता है उससे भी ज्यादा दिलचस्प था आप उनको अनुवाद कर रहे थे But anyway, we tried. लेकिन फिर भी हमने प्रयास किया You asked, right? Pitamba was asking what are the symptoms, qualities of the people and the conditions that they create in the Kali Yuga. तो पितामह को पूछ रहे थे कि कलियुग के लोगों में किस तरह के गुण हैं लक्षण हैं और किस तरह के चरित्र हैं And then how people are so much ignorant, they don't have a good intelligence, so they're easily manipulated by the different entities, let's say. लोग कितने अज्ञान में हैं और बहुत ही आसानी से अन्य जीवात्मा उनको नियंत्रण करके अपने हिसाब से चला लेते हैं You could even say religious entities. आप कह सकते हैं कुछ वो धार्मिक लोग हैं And they use, if you're not attracted by love and affection, then you need laws. So अगर you प्रेम और need fear and you need law. तो अगर आप प्रेम और स्नेह से आकर्षित नहीं होंगे तो वो कानूनों और नियमों के आधार पर आपको नियंत्रित करेंगे Right? When you want to control the masses, it's either out of love and affection, तो अगर आप भीड़ को नियंत्रण करना चाहते हैं तो प्रेम और स्नेह से कर सकते हैं or fear and intimidation. या फिर भय और डरा कर Otherwise, how do you motivate the masses? वरना कैसे आप भीड़ को प्रेरित कर पाएंगे So there are also many very intelligent people on this planet, और इस पृथ्वी में बहुत सारे बुद्धिमान लोग भी हैं but their intelligence is being used in the wrong way लेकिन उनकी बुद्धि गलत तरीके से इस्तेमाल हो रही है because they're atheistic, क्योंकि वो नास्तिक हैं and therefore they have great intelligence, but they can't use it wisely. उनके पास बहुत अच्छी बुद्धि है लेकिन उसको चतुराई से इस्तेमाल नहीं करते हैं Therefore, all these different technologies, everything is actually putting everybody under
threat. तो ये सारे तकनीकी विकास लोगों को और खतरे में डाल रही है। And then we think we're so smart and such great philosophers and mental speculators. और हम सोचते हैं हम इतने बड़े दार्शनिक हैं, मनोधर्मी हैं। But can you imagine if you have such high level of material intelligence, what is their level of mental speculation? तो आप देख रहे हैं ये भौतिक का तकनीकी विकास जो हो रहा है, उनकी बुद्धि हमसे कितनी ज़्यादा विकसित है, मनोधर्म हमसे कितना बड़ा है। And then throughout history, how much they're just speculating and concocting newer and different types of religion, so-called spirituality, different paths. आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो वो लोग अलग-अलग तरह के रास्तों को, धार्मिक रास्तों को बनाने का या मनोधर्म करके निर्माण करने का प्रयास कर रहे हैं। So if you just go in a room full of speculators, everyone has a different idea, so that's a different path for 20, 30, 50 people, right? अगर 20 लोग कमरे में मौजूद हैं, 50 लोग, सब अपना-अपना मनोधर्म करेंगे तो अपना-अपना रास्ता बना सकते हैं। What about for thousands and tens of thousands of years? तो क्या होगा, 1000 और 10,000 सालों तक ये चलेगा। So all the different empires, अलग-अलग साम्राज्य आए, all of the different religions, अलग-अलग धर्म, all the different philosophers. अलग-अलग दार्शनिक। It says unless you come up with a new theory, you cannot be considered like a great Muni or a great philosopher. ऐसा कहा जाता है, अगर आप कोई भी नया सिद्धांत लेकर नहीं आते हैं, तो आप मुनि नहीं कहला सकते। So now you're introducing all of this complexity in the Kali Yuga to people who are the most disqualified to understand any of it. तो इतनी सारी जटिलताओं वाली चीजों को, दार्शनिक दर्शन को आप कलियुग के लोगों को समझाने का प्रयास करें, जिनके पास कोई योग्यता ही नहीं है। What to speak of, the absolute truth. तो परम सत्य की जानकारी का क्या So to think that we can make sense out of anything materially or spiritually without mercy from Krishna and Krishna's parampara and the Shastra, you're living in a phantasmagoria, as Prabhupada would say. प्रभुपाद बताते हैं कि अगर आप सोचते हैं किसी भी भौतिक या आध्यात्मिक चीज के बारे में आप समझ पाएंगे अपनी भौतिक योग्यता के आधार पे, तो आप बहुत बड़े कल्पना की दुनिया में रह रहे हैं। And it says to come to right understanding and absolute understanding, we should accept authorities. कहते हैं सही समझ पाने के लिए या सबसे परम सत्य जानने के लिए हमें सही अधिकारियों को Because the चुनना है। greatest philosophy or authority is Krishna himself. He said, no greater authority than myself. कृष्णा कहते हैं मुझसे बड़ा कोई अधिकारी नहीं है, सबसे बड़े दार्शनिक कृष्ण है। And then Krishna's parampara, the cyclic succession, is authorized representatives. और कृष्ण परंपरा के प्रमाणिक अधिकारी, And the Shastras, which also are coming from the Supreme Personality of Godhead. जो शास्त्र भी परम पुरुषोत्तम भगवान से आ रहे हैं। So Krishna says, if you can hear from me inside and out and through the Shastra, कृष्ण कहते हैं अगर आप मुझे भीतर से, बाहर से और शास्त्र के माध्यम से श्रवण कर पाएंगे, then you can get perfect knowledge. तो आपको पूर्ण ज्ञान मिल जाएगा। So now it's a question of what is the qualification of hearing, तो अब प्रश्न है हमारी श्रवण में क्या योग्यता होनी चाहिए? what is the, how do you say, the eagerness for hearing. श्रवण में कितनी हमारी उत्सुकता होनी चाहिए? So anyway, I found, somehow Krishna helped me, I found a very interesting discussion by Srila Govinda Swami. एक बहुत ही दिलचस्प मुझे चर्चा मिली श्री गौर गोविंद स्वामी महाराज की गुरु और कृष्ण के कृपा से। And it really synthesizes everything that we've been discussing. और ये सारी चीजों को सार के रूप में प्रस्तुत कर रहा है जो हमने इतने दिनों तक चर्चा की। And I think when you hear this, you'll understand how it actually completely brings everything together that we've been trying to discuss. And मुझे पूरी उम्मीद है जब आप इसको सुनेंगे तो आप भी समझ पाएंगे कि कैसे हमने जितनी बातें की ये सबको एक साथ आप समझ पाएंगे। And also many statements that I've been making based on what I heard and remembered from Srila Govinda Swami, Srila Prabhupada's books and teaching. और बहुत सारे कथन जो मैंने कहे अपने श्रवण के आधार पर जो मैंने पाया था और श्री प्रभुपाद और श्री गौर गोविंद स्वामी महाराज की शिक्षाओं में वो सारी बातें लिखी। And then sometimes we're making really big, bold statements. और कभी-कभी हम बहुत भारी भरकम वाक्य कहते थे। Not just sometimes. कभी-कभी। So it's very nice when you get all confirmation of what it is that you're speaking. तो ये बहुत अच्छी बात है जब वो सारा पुष्टिकरण मिलेगा जो भी आप बात कह रहे थे सारे यहाँ पे लिखी हुई हैं। And I think when you hear this confirmation and this explanation by my spiritual master, Srila Govinda Swami, referring to Srila Prabhupada's books and teachings, you'll understand what I'm talking about. और मैं ये पूरी उम्मीद है जब आप श्रवण करेंगे श्री गौर गोविंद स्वामी महाराज कैसे अपना अनुभव या व्याख्या कर रहे हैं जो श्री प्रभुपाद की किताबों और शिक्षाओं में ही मौजूद है। You want to hear something interesting? आप ये दिलचस्प बात सुनना चाहते हैं? Hope so. मुझे उम्मीद है। Om Jnana Tamrata Shankara Jana Shalakaya Chakshun Militam Jana Tasmai Shri Guru Deva.
Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Shri Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So I think I had written this to some, I'm not sure where I wrote it, one of these Vaishnava websites. और किसी एक वैष्णव वेबसाइट पे मैंने ये सारी बातें लिखी भी हैं. Because the way I put it, it was surrender to hear Bhagavad Katha. जिस तरीके से मैंने यहाँ लिखा है, शरणागत करना भगवत कथा श्रवण करने में. By Murali Krishna Swami. मुरली कृष्ण स्वामी के द्वारा लिखा. So I must have been presenting this somewhere. I just don't remember where I presented it. अवश्य मैंने कहीं प्रस्तुत की थी, मुझे बस याद नहीं है ये मैंने कहाँ प्रस्तुत किया था. And I wrote it like many years ago. और इसको मैंने कई सालों पहले लिखा है. This is not something recently that I wrote. ऐसा नहीं कि मैंने कुछ हाल फिलहाल में ये लिखा है. But it'd be interesting for you to see how I was preaching many years ago. लेकिन बहुत दिलचस्प होगा आप लोगों के लिए देख पाना कि कितने सालों पहले मैं किस तरह से प्रचार करता How हूँ. that is consistent with what I'm preaching today. और किस तरह से वो आज मेल खाता है जैसा मैं आज प्रचार कर रहा हूँ. And then you come to your own conclusion about it. और आप खुद अपना निष्कर्ष पे आइए. So I wrote that by Sri Guru Granga's mercy, I found a nice lecture given by Srila Govinda Swami Maharaj on the topic of surrender in order to hear. तो ये प्रवचन श्री गोविंद स्वामी महाराज के द्वारा दिया गया. श्री गुरु गौरांग की कृपा से मुझे ये मिला और इसके विषय है श्रवण के लिए शरणागत करना हो. Derek, we talked about this today. लेकिन आज इसके बारे में बात करें About surrender in order to be able to hear on absolute platform. आपको शरणागति करनी होगी श्रवण करने के लिए ताकि आप दिव्य स्तर पे श्रवण कर सकें. So I said I want to present some relevant parts of the lecture which I hope you find nicely fits in with our recent discussions. और मुझे उम्मीद है इनमें जो बातें मैं आपको बताऊंगा वो हमारे हाल फिलहाल की चर्चाओं से बहुत संबंधित हैं. Hearing is a gift given to the deserving disciple श्रवण एक तरह का उपहार है जो योग्य शिष्य को मिलता है. who completely surrenders to the bona fide Sri Guru in parampara. जो प्रमाणिक श्री गुरु को शरणागत करते हैं जो परंपरा में. And without strictly following the instructions of such a Sri Guru, ऐसे श्री गुरु के निर्देश को बिना पालन किए सख्ती से then there's no question of receiving the blessing of the spiritual master. आध्यात्मिक गुरु के आशीर्वाद पाने का कोई रास्ता नहीं. And that blessing is the gift of transcendental sound, और वो आशीर्वाद है कि आपको दिव्य शब्द का उपहार मिलेगा. or Bhagavad Katha. या भगवत कथा, हरि कथा. That's the gift. ये है That's the उपहार. mercy. ये है कृपा. So, Srila Prabhupada mentions in his purport श्री प्रभुपाद अपने तात्पर्य बता रहे हैं to Srimad Bhagavatam 3:22-7 श्रीमद् भागवतम 3:22-7 that the favor of the spiritual master प्रमाणिक गुरु का कृपा is not received through any other part of the body but the ears. शरीर के किसी भी अन्य भाग से नहीं केवल कानों से पाया जा सकता है. So such a qualified guru bestows the gift of hearing to the qualified and faithful disciple. ऐसे योग्य गुरु ये श्रवण का उपहार श्रद्धावान और योग्य शिष्य को देते हैं Who completely surrenders जो पूर्ण शरणागत करता to है Krishna and to the instructions he received from his spiritual master. कृष्णा को और प्रमाणिक गुरु के निर्देशों को. If we concoct and speculate अगर हम मनोधर्म या मनगढ़ंत चीजें करेंगे and twist the instructions of the guru, गुरु के निर्देशों को तोड़ मरोड़ करेंगे no matter how good it may sound to us or to others, तो सुनने में हमें बहुत ही अच्छा लगेगा दूसरों को भी अच्छा लगेगा. we automatically disqualify ourselves अपने आप ही हम स्वयं को अयोग्य बना देते हैं from being able to hear श्रवण करने की अयोग्यता पाते for the pleasure of Sri Guru Naranga. हैं. श्री गुरु गौरांग की खुशी के लिए हम श्रवण नहीं करता. So in the letter, in a class lecture by Srila Govinda Maharaj,
तो श्री गौरवामी साहब हमारा इस प्रवचन में बता रहे थे, and this was March 18, 1993. और ये 18 मार्च 1993 में कहा गया। And I was fortunate enough to be there for this class. I remember this class. और भाग्य से मुझे याद है, मैं भी इस क्लास में मौजूद था, Because it was very profound. क्योंकि ये बहुत ही प्रसिद्ध था And so much revelation came from hearing these things. I'd never heard these things before और in इसको my life. श्रवण करके मेरे जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें प्रकाशित हुई हैं जो मैंने जीवन में पहले कभी नहीं सुनी थी। So that's why when I read it, I remember point for point, first time hearing it. जब मैंने इसको पढ़ा तो मुझे याद आया कि पहली बार जब मैंने श्रवण किया था, एक एक चीजें मुझे बहुत याद आई। So in this lecture, Srila Govinda Maharaj, I made like a title of this section. It's called "One Who Is Proud Cannot Surrender." तो मैंने यहाँ पे एक विशेष भाग में उसका शीर्षक दिया है, जिसके पास दम्भ है वो शरणागत नहीं कर सकता। Where's our brother Bob? हमारे भाई बॉब कहाँ हैं? He's leaving tomorrow, actually, Oh, to UK. oh, I see. So Gurudev said the Mahaprabhu's teaching is Charnadapi Salichena Turo Api Sakishtana Amanina Manatena Kirtaniya Siddhahari. गुरुदेव बता रहे हैं महाप्रभु की ये शिक्षाएं हैं। For those who are Hari Kirtan Kari or Nam Bhajan Kari, जो हरि कीर्तन या नाम भजन करते हैं, engaged in Hari Kirtan or Nam Bhajan, हरि कीर्तन या नाम भजन करने में लगते हैं, what should be one's attitude or mood? तो किसी का क्या भाव या क्या रवैया होना चाहिए करने के लिए? And Mahaprabhu says there is no question of pride at all. महाप्रभु कहते हैं कि दम्भ का कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए। So Shuddha means one who has acquired such material education तो शूद्र का अर्थ होता है जिसने भौतिक योग्यताएं प्राप्त की or है, material scholarship या भौतिक विद्वता or learning. या पंडित हुआ, He becomes very puffed up, very proud. तो बहुत अहंकारी, बहुत दम्भ होता है। So with that material sound, hearing, material education and scholarship, one becomes very proud, very puffed up. He cannot become dina or akinchana, which means humble. तो ये भौतिक शब्द को श्रवण करने से उसके अंदर अहंकार बढ़ता है और उसके बाद वो दीन अकिंचन नहीं बन सकता। But one who is Hari Bhajan Kari, who's doing Hari Bhajan, Nam Kirtan, must be very humble. लेकिन जो हरि कीर्तन हरि भजन करते हैं उनको बहुत ही विनम्र होना चाहिए, Otherwise, he cannot do Hari Bhajan. वरना वो हरि भजन नहीं कर सकते। There is no question of pride. दम्भ का कोई भी प्रश्न नहीं होना चाहिए। Janadapi Sanichana. अनाथ अपि सुनिश्चित। One should think himself much humbler than a blade of grass lying in the street, lowest of the low. किसी को स्वयं को रास्ते से पड़े हुए तिनके से भी नीच, सबसे अधम समझना चाहिए स्वयं। Such quality of humility is required. इस तरह की विनम्रता की आवश्यकता है, Otherwise, you cannot surrender. वरना आप शरणागत नहीं कर पाएंगे। So we're all thinking we're surrendering. हम सब सोच रहे हैं हम शरणागत कर रहे हैं, But if we still have this pride, arrogance, conceit, all of this demoniac material qualities, then what is our surrender really? लेकिन अगर हमारे अंदर दम्भ है, गर्व है, अहंकार है, अभिमान है, तो हमारे ये शरणागति का अर्थ है। So without this mood of utter humility, you cannot surrender. तो इस भाव या विनम्रता के भाव के बिना आप शरणागत नहीं कर सकते। This pride is a demoniac characteristic. ये दम्भ एक आसुरी गुण है। This is not the characteristic of a real devotee, a Vaishnava. असल भक्त या वैष्णव के ये गुण नहीं है। So how will you be able to surrender? तो कैसे आप शरणागत कर पाएंगे? So if you do not have this mood of true Vaishnava or Shuddha Bhakta, अगर आपको how will you be able to surrender? अगर आपके पास ऐसे शुद्ध वैष्णव या शुद्ध भक्त के गुण नहीं है, कैसे आप शरणागत कर पाएंगे? Because without, how do you say, purification of these false ego and demoniac qualities, how will we get intelligence and faith to know where we should surrender? तो बिना इस आसुरी गुण मिथ्या अहंकार से मुक्त हुए बिना कैसे हमें बुद्धि मिलेगी, श्रद्धा मिलेगी, हमें कहाँ शरणागत करना है? So one who is proud or puffed up, तो जो अहंकारी है, they cannot surrender. वो शरणागत नहीं कर सकते। There is no question of surrender. शरणागति का कोई प्रश्न ही नहीं है, Or this Atmanivedana. या आत्मनिवेदन करने। So how will his heart be purified? तो ये हृदय फिर कैसे शुद्ध हो सकता है?
For my own purification, I will write this thing, Kaviraj Goswami says. कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं स्वयं को शुद्ध करने के लिए मैंने ये लिखा। There's no question of pride. धम्म का कोई प्रश्न नहीं होता। So he's writing Chaitanya Charitamrita for his own purification. तो वो चैतन्य चरितामृत लिख रहे हैं स्वयं के शुद्धिकरण के लिए। That is humility. ये विनम्रता है। And this service in this humble mood is rendered for the pleasure of Shri Guru and Gauranga. और इस तरह से शरणागत किया जा सकता है विनम्र भाव से श्री गुरु गौरांग की खुशी के लिए। Or Guru and Krishna. गुरु और कृष्ण की खुशी। And thereby your heart will be purified. इस तरह से आपका हृदय शुद्ध हो सकता है। Otherwise your heart cannot be purified. वरना आपका हृदय कभी शुद्ध नहीं हो सकता। Rather it will become more and more contaminated. इसके बजाय वो और ज़्यादा से ज़्यादा दूषित होता जाएगा। So all Krishna conscious activities should be undertaken for personal purification. सारे कृष्ण भावनामृत कर्म स्वयं की शुद्धिकरण के लिए किया जाना चाहिए। Apana sodite, not for material gain. अपना शरीर के भौतिक लाभ के लिए। So there should be no material purposes should be there. तो कोई भी भौतिक उद्देश्य इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। It's a question of seva, a loving service, love for Guru and Krishna. ये सेवा प्रेममय सेवा गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। Guru and Gauranga. गुरु और गौरांग। Not for your own material name, fame, profit, prestige. स्वयं के यश मान नाम और प्रतिष्ठा लाभ के लिए नहीं। That is not the purpose. ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए। So as long as we're maintaining these materialistic conception, bodily conception, and demoniac qualities and materialistic gross and subtle desires, Prabhupada, you're not really acting, you're not really devoted. और जब तक हम इस तरह के भौतिक कलमश आसुरी गुण प्रकट करेंगे, भौतिक इच्छाएं आसक्ति को बनाए रखेंगे, प्रभुपाद बताते हैं आप शरणागत हैं। Prabhupada said that you're actually non-devoted. प्रभुपाद कहते हैं आप असल में अभक्त हैं। So if we are not devotee and we're non-devotee, then how we can surrender and how we can perform the devotional service or activity for no gross or subtle material purpose. अगर हम भक्त नहीं हैं, अभक्त हैं, तो कैसे हम ये सेवा कर सकते हैं श्रवण की भक्ति में सेवा और बिना किसी भौतिक उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए। So of course we're talking about Shuddha Bhakti, we're talking about Shuddha Bhakti. और अवश्य यहाँ शुद्ध भक्त और शुद्ध भक्ति की बातें हो रही हैं। So humility in order to surrender. विनम्रता शरणागत करने के लिए। Remember eternal servants of Guru and Krishna. हमें याद रखना चाहिए हम गुरु और कृष्ण के And in that mood of humility and service, rendering that service in a mood of loving devotion for no gross or subtle materialistic purpose. इस तरह से विनम्रता के साथ भक्ति में सेवा करना बिना किसी भौतिक उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए। So this is called first surrender, then hear. इसके बाद आता है पहले शरणागत तब श्रवण। Of course you could say, well, if you don't hear from Krishna where to surrender, then how can you surrender? अब आप पूछ सकते हैं अगर आप पहले कृष्ण से ये सुनेंगे नहीं कहाँ शरणागत करना है तो कैसे आप शरणागत करेंगे? Krishna telling where you should surrender. कृष्ण आपको बताएंगे कहाँ Those शरणागत who करना है। sincerely want to surrender and serve Krishna. अगर आप एक कृष्णता से गंभीरता से कृष्ण को शरणागत करना चाहते हैं। So Prahlad Maharaj, he's speaking of 9 types of Navada Bhakti प्रहलाद महाराज 9 तरह की भक्ति नवदा भक्ति के बारे में बता रहे हैं। from the Srimad Bhagavatam 7:5-23-24. श्रीमद् भागवतम 7 So the 9 types of 9-fold processes of bhakti. नवदा भक्ति के मार्ग को बता रहे हैं। But before you can practice 9-fold processes of bhakti, beginning with Shravanam, तो नवदा भक्ति शुरू करने के लिए सबसे पहले श्रवण आता है। one must first, Prahlad Maharaj says, you must first completely dedicate yourself and surrender to the lotus feet of Shri Guru and Gauranga. प्रहलाद महाराज बताते हैं सबसे पहले अपने आप को पूरा समर्पण या शरणागत करना होगा श्री गुरु के चरण कमल में। So we hear, oh, Shravanam is first most important aspect of devotional service. हम सुनते हैं श्रवण भक्ति का सबसे पहला और महत्वपूर्ण भाग है। But before we can do that Shravanam, this complete faith and surrender to spiritual master Shri Guru and Krishna, Shri Guru and Gauranga, that is required first before we can do 9-fold processes of bhakti.
तो श्रवण करने के लिए सबसे पहले प्रमाणिक श्री गुरु के चरण कमल में अपने आप को पूर्ण शरणागत करना होगा पूरी श्रद्धा के साथ. He said the sadhaka or devotee who cultivates or performs his ninefold processes of bhakti, कहते हैं जो साधक या भक्त इस नवदा भक्ति का अभ्यास करता है, he must first completely dedicate himself to the lotus feet of his spiritual master, Sri Guru Krishna. उससे पहले स्वयं को समर्पित करना होगा गुरु के श्री गुरु के चरण कमल में कृष्ण. If one does so, in my opinion, Prahlad Maharaj says, राम बताते हैं अगर कोई ऐसा करता है तो मेरे विचार से he has studied the best तो उसने सबसे श्रेष्ठ अध्ययन किया है and he is the most learned. और वो सबसे बड़ा विद्वान है. It says he's rendering this service as Navada Bhakti for the pleasure of Shri Guru and Gauranga, not for his own self. तो मुझे बता रहे हैं ये नवदा भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं श्री गुरु गौरांग की प्रसन्नता के लिए, खुद के भौतिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए नहीं. So hearing for the pleasure of Shri Guru and Gauranga. तो श्रवण करना श्री गुरु गौरांग की प्रसन्नता के लिए. And thereby his heart will become purified. तब उनका हृदय शुद्ध हो सकता है. If he does otherwise for some other motive, अगर वो अन्य तरीके से या दूसरे उद्देश्य की पूर्ति के लिए करता है, his heart will become contaminated. हृदय दूषित हो जाएगा. So that's interesting. बहुत दिलचस्प बात है. So if we have gross or subtle material desire and you're doing this so-called Navada Bhakti, आपके अंदर कोई स्थूल या सूक्ष्म भौतिक इच्छाएं हैं और ये आप नवदा भक्ति का अभ्यास कर रहे not हैं, only does it not purify you, तो न तो केवल ये आपको शुद्ध करेगा but will contaminate you. बल्कि आपको ये दूषित करेगा. So if you're chanting, for instance, we're chanting Nama Parad, तो मान लेते हैं अगर हम नाम अपराध जप कर रहे हैं then it says that the benefit of the result of chanting Nama Parad is you get the fulfillment of your sinful or materialistic desire. लेकिन नाम अपराध करने का अंतिम फल या लाभ आपको ये मिलेगा कि सारे पाप कर्म की इच्छा आपकी पूरी हो जाएगी. That's why Prabhupada said chant and try to give up the offenses. प्रभुपाद ने कहा जप करो पर लेकिन अपराधों को त्याग करने का प्रयास But करो. if we're chanting with offense, लेकिन अगर हम नाम ले रहे हैं अपराध के साथ, not following the instruction of spiritual master, not for the pleasure of Guru and Krishna, not for our own purification, then rather will remain contaminated. हम अपराधों को त्याग करने का प्रयास नहीं करें, गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता स्वयं को शुद्धिकरण के लिए नहीं कर रहे हैं, तो उसके इस नाम के माध्यम से हम स्वयं को दूषित करेंगे. And it's simple in the sense that Krishna is the purest of the pure. तो ये बहुत सरल बात है जानना कि कृष्ण सबसे शुद्धतम के शुद्ध है. So if we don't associate with Sri Guru and Krishna, we're not associating with the purest of the pure. अगर हम श्री गुरु और कृष्ण के साथ संग नहीं कर रहे हैं तो हमसे सबसे And शुद्धतम we're meditating on asat, और हम असत पे ध्यान लगाएंगे then automatically we're going to become more and more contaminated. तो अपने आप ही हम और ज्यादा दूषित होते जाएंगे. If he does otherwise, for some other motive, his heart will become contaminated. अगर किसी भी अन्य उद्देश्य से करेंगे तो आपका हृदय This दूषित is हो जाएगा. the purport here. और ये इसका तात्पर्य है. Any questions so far? कोई प्रश्न अब तक? Are you following it? क्या आप समझ पा रहे हैं? क्या आपका ये साफ हो रहा है? Good. ठीक है. So the first and most important thing is Shravanam. सबसे पहला सबसे महत्वपूर्ण चीज है श्रवण. This is a question of hearing. श्रवण का प्रश्न है. And one who hears this Harikatha, Bhagavad Katha, जो ये हरि कथा भगवत कथा श्रवण करता है, they must first surrender. तो पहले उनको शरणागत करना होगा. So we're hearing with this, well, let me hear and I'll see if I want to surrender. हम जाते हैं देखते हैं हम श्रवण करेंगे और फिर देखेंगे हम शरणागत करना है या नहीं. But actually, without surrender, you cannot actually hear. कहते हैं बिना शरणागति के आप श्रवण नहीं कर पाएंगे. Because you'll just be hearing Maya on the intellectual, mental, sentimental level. क्योंकि आप केवल माया को सुन रहे हैं बुद्धि के स्तर पे, मानसिक स्तर पे. It says one who surrenders to Rishikesh कहते हैं जो ऋषिकेश को is शरणागत करता है, master of mind and senses, जो मन इंद्रिय के स्वामी हैं, then he'll purify, control the mind and senses. तो वो शुद्ध करेंगे, नियंत्रित करेंगे मन और इंद्रियों को. Then we can hear spiritually. तब हम आध्यात्मिक तरीके से श्रवण So करेंगे. without surrender, there's no question of purification, control of the mind and senses. बिना शरणागति के शुद्धिकरण और नियंत्रण का कोई प्रश्न नहीं उठता मन और We इंद्रियों will का. not develop his divine eyes or divine ears by which we can hear Krishna. हमें ये दिव्य नेत्र या दिव्य कान नहीं मिल पाएंगे जिसके माध्यम से हम कृष्ण को श्रवण कर पाएंगे. So in order to hear this katha,
Harikatha, Krishna Nam, one must first surrender. तो ये हरि कथा कृष्ण कथा श्रवण करने के लिए किसी को सबसे पहले शरणागत करना होगा. He must hear for the pleasure of Guru and Gauranga, Guru and Krishna. उसे अवश्य श्रवण करना होगा गुरु गौरांग गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, Not for his own pleasure. स्वयं की आनंद के लिए. So this is the first thing in bhakti or seva, तो ये सबसे पहला भक्ति या सेवा and है, that service is in the mood of loving service. और ये भाव प्रेम से होना चाहिए. So we must hear for the pleasure of Guru and Gauranga, Guru and Krishna, हमें श्रवण करना चाहिए गुरु गौरांग गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के and लिए. that first item is hearing, is Shravana. और सबसे पहला सेवा का भाग है श्रवण. So Prahlad Maharaj says, before you can do these ninefold processes of bhakti, you must completely dedicate yourself and surrender to Shri Guru and Krishna. प्रहलाद महाराज बताते हैं ये नवदा भक्ति करने के सबसे पहले श्रवण करने के पहले आपको श्री गुरु गौरांग के चरण कमल में शरणागत करना होगा. Now Gurudev said, why do we usually hear? गुरुदेव बता रहे हैं हम सामान्यतः श्रवण क्यों करते हैं? We hear because it will give us pleasure. We want to hear something pleasurable, interesting, for our own pleasure. तो हम सुनते हैं कि हमें सुन के कुछ आनंद आता है, स्वयं के आनंद के लिए, स्वयं के संतुष्टि के लिए हम श्रवण करते हैं. And also one who does kirtan, speaker, they should only speak for the pleasure of Shri Guru and Gauranga, Guru and Krishna, not for own pleasure. और जो प्रवक्ता है उसे भी श्री गुरु गौरांग की प्रसन्नता के लिए कीर्तन करना चाहिए, स्वयं की प्रसन्नता के लिए. So that motivation should be how do we please the spiritual master, Shri Guru and Krishna. तो हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कैसे हम श्री गुरु गौरांग कृष्ण को सुखी कर पाएं. Then automatically you'll get pleasure. तो अपने आप ही आपको आनंद मिलेगा, It's automatic. अपने आप ही होगा. But if you cannot please Shri Guru and Gauranga, Shri Guru and Krishna, then is that service, is it loving service? लेकिन अगर आप श्री गुरु गौरांग गुरु और कृष्ण को प्रसन्न नहीं कर पा रहे हैं तो क्या वो सेवा प्रेम से कर रहे हैं आप? I remember one person said to me, thank you so much for tolerating my service. मुझे याद है एक बार मुझे किसी ने कहा कि धन्यवाद आपने मेरी सेवा को सहन किया. So what is the service that has to be tolerated? ये कैसी सेवा है जिसको सहन करने की जरूरत If पड़ेगी? it's done with loving affection, it's just appreciated. You may not do it perfectly, but if you do it with love and affection, then that's pleasing, isn't it? अगर आप प्रेम और स्नेह से करेंगे तो हो सकता है वो पूर्ण तरीके से ना कर पाए तो अब फिर भी उसकी सराहना की जाएगी. Not, oh, thank you for tolerating my service. सने कि धन्यवाद मेरी सेवा को सहन करने. You look awful sleepy there. You're making me tired. आप नींद में लगे, मुझे थका रहे हैं आप. You're giving me your association. I'm ready to fall asleep. मुझे अपना संग देख के मुझे ऐसा लग रहा है Between you and him. आप में और उनके बीच में. It's in a straight line. वो एकदम सीधी रेखा में. And then if I follow the line, then I got, Surav in the back. इसी लाइन में आगे जाऊँ तो मुझे ज़ोर रास्ते में. That's why I'm doing for the pleasure of Shri Guru and Gauranga. इसीलिए मैं श्री गुरु गौरांग की प्रसन्नता के And लिए from my own pure. उसकी शुद्धि करने के लिए. Say, if you cannot please Shri Guru and Gauranga, Shri Guru and Krishna by your loving service, अगर आप श्री गुरु गौरांग गुरु और कृष्ण को सुखी नहीं कर पा रहे हैं अपने प्रेममय सेवा से, then is that really loving service if you cannot please them? क्या ये किस तरह का प्रेममय सेवा है कि आप उनको प्रसन्न नहीं कर पा रहे हैं? If you do not render this service for the pleasure, for their pleasure, how do you think that you will get pleasure? तो अगर आप वो सेवा उनकी प्रसन्नता के लिए नहीं करेंगे तो आपको क्या लगता है किस तरीके से आप आनंद प्राप्त कर पाएंगे? What you will get instead is all material. जो आपको मिलेगा वो पूरा भौतिक वस्तुएं And मिलेंगे. the consequence of material means unlimited suffering. और भौतिक चीज पाने का अंत होता है असीमित दुख प्राप्त करना. Material pleasure, so-called happiness, is temporary and a fleeting chanchalam, भौतिक सुख बहुत अनित्य होता है, चंचल होता है, and the result is unlimited misery. और फल असीमित दुख के रूप में मिलेगा. So we say this thing that the first item is Shravanam, hearing. तो हम कहते हैं सबसे पहला भाग है भक्ति का श्रवण. One who hears properly is a real disciple. जो सही तरीके से श्रवण करते हैं वो असल शिष्य है. But unless you genuinely surrender or completely dedicate yourself wholeheartedly,
अगर आप सही तरीके से शरणागत ना करें, अपने पूरे हृदय से स्वयं को समर्पित ना करें, you cannot properly hear. आप सही तरीके से श्रवण नहीं कर सकते। This katha will never enter into your ear. ये कथा कभी भी कानों के अंदर प्रवेश नहीं करेगी। In whose ear will this Hari Katha, Krishna Katha enter? और किसके कानों में हरि कथा, कृष्ण कथा प्रवेश करती है? It will enter into the ear of one who is completely surrendered. ये उसके कानों में प्रवेश करता है जिसने पूर्ण शरणागत किया है। So without complete surrender, nobody can hear. बिना पूर्ण शरणागति के कोई भी श्रवण नहीं कर सकता। We think we're hearing, we think we're disciple, हम सोचते हैं हम श्रवण कर रहे हैं, we think we're surrendered, हम शरणागत कर रहे हैं, but is it apparent or is it absolute? तो क्या ये केवल अपार तरीके से है या फिर? Of course, Krishna is the witness and the judge, और कृष्ण उसके गवाह हैं और वो न्याय करेंगे। and our results will also show us. और हमारे फल भी हमें दिखाएंगे। Unless you genuinely surrender and dedicate yourself wholeheartedly, जब तक आप सही तरीके से शरणागत नहीं करें, पूरे हृदय से अपने आप को समर्पित न करें, you cannot properly hear. आप सही तरीके से श्रवण नहीं कर पाएंगे। So unless one wants to surrender completely and sincerely surrender and serve Krishna, then how you get bona fide guru, how you get intelligence and faith, where to surrender. अगर आप एक निष्ठा से गंभीरता से कृष्ण को शरणागत नहीं करना चाहते हैं, तो क्या लगता है आपको बुद्धि और श्रद्धा कहाँ से मिलेगी कि आपको? So you say, I want to hear, आप कहेंगे कि मुझे श्रवण I need to surrender. मुझे शरणागत करनी है, Where do I surrender and who do I hear from? कहाँ शरणागत करूँ और कहाँ जाकर श्रवण करूँ? That arrangement is by Krishna's arrangement. तो ये व्यवस्था कृष्ण की व्यवस्था होती है। And we've read all the quotes where Prabhupada said that Krishna will guide you and he'll dictate to you that you should surrender and accept this person as your spiritual master. और हमने बहुत सारे कथन पढ़े जहाँ बता रहे हैं कि कृष्ण आपको मार्गदर्शन करेंगे, सीधे सीधे बताएंगे इसे आपको आध्यात्मिक गुरु के रूप में But स्वीकार if we करना cannot hear Krishna, that means we're lost. लेकिन अगर हम कृष्ण को सुन नहीं पा रहे, इसका मतलब So हम if भटक we're जाएंगे। lost and cannot hear Krishna, then where is the idea of intelligence and faith and where to and who to surrender to? तो अगर हम भटके हुए हैं, कृष्ण को सुन नहीं पा रहे हैं, तो ये बुद्धि और श्रद्धा कहाँ से मिलेगी? हमें कहाँ जाके शरणागत करनी है, किनसे श्रवण करना है? And Prahlad Maharaj says that without that complete surrender and complete dedication wholeheartedly, you'll not be able to do the Shravan. प्रहलाद कहते हैं इस तरह की शरणागति के पूरे हृदय से समर्पण नहीं करने से आप श्रवण नहीं कर पाएंगे। So this katha will never enter into your ear. तो ये कथा कभी भी आपके कानों के अंदर प्रवेश नहीं करेगी। In whose ear will it enter? और किनके कानों में ये प्रवेश करेगा? It will enter into the ear of one who is completely surrendered. ये उनके कानों में प्रवेश करेगा जिसने पूर्ण शरणागत किया है। This is Tattva Vichar. ये है तत्व विचार। Are you hearing this everywhere? क्या आप इसको हर जगह सुनते हैं? I never heard it before. मैंने ही पहले कभी Before I met Srila Govinda Swami. Did you ever hear this before? श्रील गौरव सम्राट से मिलने से पहले क्या आप लोगों ने पहले कभी ये सुना था? First one must dedicate himself and fully surrender, Prahlad Maharaj statement. प्रहलाद महाराज के वाक्य है किसी को सबसे पहले पूर्ण समर्पण करना होगा, शरणागत करना होगा। Then and only then तब और केवल तभी can one develop this ninefold processes of bhakti beginning with the Shravana. कोई ये नवदा भक्ति को अभ्यास कर सकता है जो श्रवण से शुरू होता है। Prahlad Maharaj says, in my opinion, he has studied the best. प्रहलाद महाराज कहते हैं मेरे विचार से उसने सबसे श्रेष्ठ अध्ययन किया है। He is the most learned person, वो सबसे बड़े ज्ञानी हैं for he has acquired complete knowledge. क्योंकि उनको पूर्ण और ज्ञान है। So unless one surrenders, जब तक कोई शरणागत करता है he cannot hear. वो श्रवण नहीं कर सकता। He will have some pride in him. तो उनके अंदर कोई दम्भ रहेगा Oh, I know better. कि मुझे बेहतर जानकारी है। Such proud fellow, puffed up fellow. ऐसे अहंकारी और दम्भी What will he व्यक्ति say that I should hear, that I don't already know? वो ऐसा क्या कहेंगे जो मुझे श्रवण करना चाहिए या जो मैं पहले So से if नहीं this जानता। pride is there, there's no question of surrender. तो अगर ये दम्भ होगा तो शरणागति का कोई प्रश्न नहीं उठता। So then this Harikatha will never enter into your तो ears, ये हरि कथा कभी भी आपके कानों के अंदर प्रवेश नहीं करेगा because one is just running after his own name, fame, adoration, prestige, क्योंकि स्वयं के नाम, यश, मान, प्रशंसा और प्रतिष्ठा के पीछे and जाना है। material gain, material profit. भौतिक लाभ, भौतिक चीजों के लिए। That means as long as we have this karma, jnana, and yoga, इसका
desire, हमारे अंदर एक कर्म ज्ञान योग की इच्छाएं होंगी gross and subtle material sense gratification स्थूल या सूक्ष्म भौतिक इंद्रिय तृप्ति that will keep us on false ego जो platform हमें मिथ्या अहंकार के स्तर में बनाए रखेगा and therefore will not have purified mind, intelligence and senses. और इसलिए हमें शुद्ध मन बुद्धि इंद्रिय नहीं मिलेंगे Therefore will not be able to, the katha will never enter inside of us इसलिए कथा कभी भी हमारे अंदर प्रवेश नहीं करेगा because we're maintaining these gross and subtle material desires and attachments. क्योंकि हम इस तरह के स्थूल या सूक्ष्म भौतिक इच्छाओं और आसक्तियों को बनाए हुए हैं And we're not doing it for the pleasure of Shri Guru Ranga, Guru Krishna. और हम श्री गुरु गौरांग गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए नहीं कर रहे So one's heart will be contaminated, not purified. तो किसी का हृदय दूषित रहेगा शुद्ध नहीं होगा Surrender to Rishikesh to Krishna is what, and his representative is what purifies mind, intelligence and senses. तो ऋषिकेश के प्रतिनिधि को शरणागत करने से मन बुद्धि इंद्रियों को शुद्ध किया जा सकता है That's not our true desire. Krishna will know it, and whatever we're gross or subtly attracted, attached to, and desiring, then we'll just simply run after that type of material contaminated interest or topics. अगर ये हमारी असल इच्छा नहीं है और हमारे अंदर भौतिक इच्छाएं भौतिक आसक्तियां सूक्ष्म या स्थूल रूप से तो हम केवल उनको पूर्ति करने के लिए उनके पीछे भागते रहते हैं So the first item is hearing, तो सबसे पहला भाग है श्रवण Shravanam, श्रवणम and one who hears this Bhagavad Katha or Krishna Katha, they must first surrender. और जो ये भागवत कथा कृष्ण कथा श्रवण करना चाहते हैं पहले उनको शरणागत करना होगा They must put complete faith in the words of Guru, Sadhu and तो Shastra. उसे पूर्ण श्रद्धा रखनी होगी गुरु साधु शास्त्र के वाक्यों में Then he will surrender. तब वो शरणागत करेगा So without complete faith in Guru, Sadhu and Shastra, how you'll surrender? तो बिना पूर्ण श्रद्धा के गुरु साधु शास्त्र Will में be on कैसे आप that शरणागत doubting mental platform, sentimental हम platform. संदेह करेंगे भावुक स्तर पे Will not trust Krishna. कृष्ण Will के not ऊपर trust विश्वास and नहीं करेंगे understand Guru, Sadhu and Shastra. हम विश्वास नहीं करेंगे समझ नहीं पाएंगे गुरु साधु शास्त्र So then how will we surrender? तो कैसे हम शरणागत And then करेंगे if we don't really surrender, we cannot hear properly. और अगर हम असल में शरणागत नहीं करेंगे तो हम सही Will not तरीके से enter श्रवण नहीं into कर the पाएंगे। ear. हमारे कानों के अंदर ये प्रवेश नहीं And they करेगा will not get the effect of the benefit of that hearing process. और आपको प्रभाव या लाभ नहीं दिख पाएगा वो श्रवण की प्रक्रिया का So in order to properly do that shravanam, one must first surrender, putting complete faith in the words of Guru, Sadhu and Shastra. तो सबसे पहले ये श्रवण करने के लिए किसी को पूर्ण शरणागत करना होगा और पूरे हृदय को समर्पित करना होगा गुरु साधु शास्त्र And then he will surrender. तब वो शरणागत कर पाएंगे Without complete faith in Krishna, Guru, Sadhu and Shastra, then how you can surrender? बिना पूर्ण श्रद्धा के कृष्ण में गुरु साधु शास्त्र में कैसे आप शरणागत कर पाएंगे And without that surrender, then this katha will never enter into your ears. और बिना इस शरणागति के कथा कभी भी आपके कानों के अंदर प्रवेश नहीं करेगा When you surrender, then the katha will enter into your ears. जब शरणागत करेंगे तब ये कथा आपके कानों के अंदर प्रवेश करेगा Otherwise, if you don't surrender, वरना अगर आप शरणागत नहीं करेंगे because you have no faith, क्योंकि आपके पास कोई श्रद्धा नहीं है then it will never enter into your ear. तो ये कभी भी आपके कानों के अंदर प्रवेश नहीं करेगा Therefore, your heart will never be purified. और इसीलिए आपका हृदय कभी शुद्ध नहीं हो पाएगा So remember, other than I was saying that Krishna Katha, it doesn't enter into your ear, then how you get purified? पिछली रात मैंने बताया था कि अगर ये कृष्ण कथा आपके हृदय के अंदर कानों के माध्यम से प्रवेश नहीं करेगा तो कैसे आप शुद्ध हो पाएंगे So without intelligence and faith from Krishna, from Chaitya Guru Paramatma, Super Soul, then how do we know where to surrender? तो बिना बुद्धि के श्रद्धा के परमात्मा चैत्य गुरु से ये बुद्धि पाई बिना कैसे And हम then who कैसे really जान wants सकते to surrender to Krishna, to Guru and Krishna? हैं? और कौन असल में गुरु और कृष्ण को शरणागत करना चाहता है That's another point we've been discussing. ये वो एक और बात है जिस पे हम चर्चा कर रहे थे Where is the necessity? Where is the urgency? वो जरूरत या वो आपातकालीन स्थिति कहाँ है We हमारे had to पास? tell about World War III last night to find some urgency. तो हम तीसरे विश्व युद्ध के बारे में बात करनी पड़ेगी हम अपनी आपातकालीन स्थिति को समझ पाए Intelligence and faith, that first mercy comes from Krishna. क्योंकि बुद्धि श्रद्धा सबसे पहली कृपा ये कृष्ण से मिलेगी Then if for one who wants to surrender and serve Krishna, जो असल में कृष्ण को शरणागत उनकी सेवा करना चाहते हैं sincerity and seriousness. गंभीरता और एक निष्ठता Prabhupada said that is the problem. और कहते हैं Not who's a guru or what's a guru.
ये क्या गुरु है, कौन है गुरु? If Krishna sees that you really want sincerely, seriously to surrender, then that first installment of his mercy will give you intelligence and faith who to accept as your spiritual master. तो अगर आप एक निष्ठता से, गंभीरता से कृष्ण को शरणागत की सेवा करना चाहते हैं, तो कृष्ण आपको ये बुद्धि देंगे कि किनको जाके आपको शरणागत करना है। Then you'll have this real faith तब आप in Krishna and Guru. असल श्रद्धा मिलेगी कृष्ण में और गुरु में। Then you can surrender. तब आप शरणागत कर पाएंगे। So once Krishna showed that he essentially Govinda Swami and he is pure by medium of Krishna, once I had that intelligence and faith, then the only question is, what does Krishna want me to do? एक बार जब मुझे कृष्ण ने ये बुद्धि और श्रद्धा दी कि उन्होंने श्री गौर गोविंद स्वामी महाराज को मेरे पास भेजा है, तो मेरा सबसे एक ही प्रश्न था कि कृष्ण आप मुझसे क्या चाहते हैं? So without that faith, how you'll surrender and say whatever Krishna wants me to do, you please just say it. तो इस श्रद्धा के बिना कैसे आप शरणागत करेंगे और कैसे कह पाएंगे कि कृष्ण आप जो भी मुझे करने को कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ? So unless you have complete faith in the words of Guru, Sadhu and Shastra, तो जब तक आपको पूर्ण श्रद्धा नहीं मिल जाती गुरु साधु शास्त्र के वाक्यों में, then you cannot surrender. तो आप शरणागत नहीं कर पाएंगे। And without surrendering, this katha, Krishna in the form of transcendental sound, will never enter into your ears. तो बिना इस शरणागति के कृष्ण हरि कथा कृष्ण कथा के माध्यम से दिव्य शब्द के माध्यम से कभी भी हमारे अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। Because you do not have, because Buddha says, because you have no faith. गुरुदेव बताते हैं यहाँ पे क्योंकि आपके पास कोई श्रद्धा नहीं है। Therefore, will never enter in your ear, and your heart will never be purified. और इसलिए अभी कभी आपके कानों में आपके हृदय में प्रवेश नहीं करेगा और कभी आप शुद्ध नहीं हो पाएंगे। So that's a Shastra, Guru Sadhu Shastra confirmation of what I told you. तो ये गुरु साधु शास्त्र का पुष्टिकरण है यहाँ पे कि जो मैंने आपको बताया था। If you try to make your own endeavor, अब अगर आप स्वयं से प्रयास करेंगे, you cannot have it. आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। Because there's no question of surrender and service at all. क्योंकि कोई शरणागति या सेवा का भाव बिल्कुल नहीं। So if we just try to do it on our own, अगर हम स्वयं की क्षमता से करने का प्रयास करें, one is not real true servitor. वो असल में सेवक नहीं है। Buddha says, although he is a shishya, गुरुदेव बता रहे हैं यद्यपि वो एक शिष्य हो सकता है, a disciple, एक शिष्य हो सकता है, he's a pretender, लेकिन वो एक only a duplicitous person. केवल एक कपटी है। Although he's shishya, he's a pretender, only duplicitous person. यद्यपि वो एक शिष्य है लेकिन वो दिखावा कर रहा है और एक कपटी है। Because they have some other interest and desire. उनके अंदर कोई अन्य इच्छा और रुचि है। That means we're maintaining this karma, jnana, yoga, material, gross and subtle material attachment and desire. लेकिन कर्म ज्ञान योग इस तरह की भौतिक इच्छाएं आसक्तियों को अपने अंदर बनाए हुए हैं। So we're being duplicitous. हम कपट कर रहे हैं। We're saying we're servant, we're disciple. हम कह रहे हैं हम सेवक हैं, हम शिष्य हैं। But we're not putting faith, neither we can surrender, neither we can hear. ना तो हम श्रद्धा रख पा रहे हैं, ना हम शरणागत कर पा रहे हैं, ना हम श्रवण कर पा रहे हैं। There should only be one purpose. केवल एक ही उद्देश्य होना चाहिए। How can I completely dedicate myself at the lotus feet of the supremely full Purusha Vastu, that is Krishna? तो कैसे मैं अपने आप को पूर्ण समर्पित कर पाऊंगा इस वस्तु पे कृष्ण में? No other purpose is there. कोई अन्य उद्देश्य नहीं है। This is Guru Tattva. ये है गुरु तत्व। He is a real disciple, वो एक असल शिष्य है and he inherits the right to hear. और उसे श्रवण का अधिकार मिलता है। It is a question of inheritance. ये प्राप्ति करने का सवाल है। Only he can hear. केवल वही श्रवण कर सकता है। Otherwise, there is no question of hearing. वरना श्रवण का कोई प्रश्न ही नहीं। There is no right of hearing. श्रवण का कोई अधिकार ही नहीं है। This is a very, very deep thing. ये बहुत गहरी बात है। So understand the purport of what I'm saying. तो उस तात्पर्य को समझने का प्रयास कीजिए जो मैं कह रहा हूँ। He is a real disciple, so he inherits the right of hearing.
from his guru. जो असल शिष्य है वो गुरु से श्रवण का अधिकार प्राप्त करता है One who understands this thing very well in tattva, और जो इस बात को बहुत अच्छे तरीके से तत्व में जानता है by hearing from such a bona fide guru, ऐसे प्रमाणिक गुरु से श्रवण करके and then by the mercy of that guru, और ऐसे गुरु की कृपा पाके he is a real disciple. वो असल शिष्य बन पाता है He is a real servant. वो असल सेवक बनता है So one who understands it very well in tattva, after hearing from tattvavid guru, जो इसे बहुत अच्छे तरीके से तत्व में जान पाता है तत्वविद गुरु से श्रवण that करने के means बाद they receive the right of the gift or the inheritance of hearing, इसका मतलब उन्हें अधिकार और उपहार प्राप्त होता है श्रवण का अधिकार then he is a real disciple. वो असल शिष्य है He's real servant. वो असल दास है Then you have to join Guru Sankirtan. तब आपको गौर संकीर्तन में जुड़ना होता है That is all auspicious for you. जो आपके लिए बहुत ही शुभ है First, completely surrender with faith. पहले पूर्ण शरणागत करना है श्रद्धा के साथ Then, for the pleasure of Sri Guru Ranga, Sri Guru Krishna, cultivate this Shravanam Kirtanam Bhakti. तो एक गुरु श्री गुरु गौरांग की प्रसन्नता के लिए श्रवणम कीर्तनम ये भक्ति का अभ्यास करना Then you can open your ear and hear this nectarian Krishna-katha. तब अपने आप कानों को खोल के आप इस अमृत कृष्ण कथा को श्रवण कर Then drink the nectar emanating from it through the ear. और इस अमृत को पीना होगा जो हमारे कानों के भीतर से हम पिएंगे Then your heart will become purified. तब आपका हृदय शुद्ध हो पाएगा Then you will be established in Sambandha. तब आप संबंध ज्ञान में स्थापित हो Your पाएंगे relationship with Krishna will be established. आप कृष्ण के साथ संबंध स्थापित हो जाएगा You will receive Sambandha Gyan. आपको संबंध ज्ञान प्राप्त You'll होगा become real Das, आप असल दास बन पाएंगे Krishna Das. कृष्ण दास How's that for an absolute understanding? ये कैसा रहेगा तत्व विचार समझ के लिए Guru Nasasya. One should not be a guru if he cannot deliver a jiva from the clutches of Maya. किसी को गुरु नहीं बनना चाहिए अगर वो किसी जीवात्मा को माया के बंधन से मुक्त नहीं करा सकता So it comes back to who has received that inheritance, तो बात वहीं वापस आ जाती है किसने गुरु की who is संपत्ति प्राप्त की qualified to receive that inheritance, कौन योग्य बन पाया गुरु की संपत्ति का who's established in his own relationship with Krishna through his guru. और जिसने स्वयं का संबंध स्थापित किया है कृष्ण के साथ गुरु के माध्यम से Otherwise, one should not be a guru वरना किसी को गुरु नहीं बनना चाहिए if he cannot deliver that jiva from the clutches of Maya अगर वो किसी जीव को माया के बंधन से or मुक्त the करा clutches सकते of death. या मृत्यु के चंगुल से मुक्त नहीं He करा is सकते not guru. वो गुरु नहीं है One who can inculcate pure loving devotional service unto you, that is a real guru. जो आपके अंदर शुद्ध प्रेम में भक्ति में सेवा विकसित कर सकता है वो है गुरु If you tread this path of pure bhakti, prem bhakti, अगर आप इस प्रेम भक्ति शुद्ध भक्ति के पथ पे आगे then there will be no fear of death, तो मृत्यु का कोई भय नहीं होगा no fear of Yamaraj. यमराज का कोई भय नहीं रहेगा So all fear and anxiety will leave you, तो सारी भय और चिंताएं आपसे दूर चली जाएंगी and you'll understand that my guru has saved me from the clutches of Maya, और आप समझ पाएंगे कि मेरे गुरु ने मुझे माया के चंगुल से clutches बचाया of है Yamaraj, यमराज के हाथों से बचाया and Mrityu, मृत्यु के हाथों death. से मृत्यु I'm quoting Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. तो यहाँ श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के वाक्य बताए जा रहे हैं He who had made me realize my eternal servitorship. जिसने मेरा नित्य दासत्व मुझे स्मरण कराया He is my Satguru, eternal guru, real guru. वो मेरे सतगुरु नित्य गुरु असल गुरु हैं He has established my relationship with the Supreme Eternal. उन्होंने मेरा संबंध स्थापित किया है नित्य परम पुरुष के साथ So we don't surrender, we don't hear, we don't purify our consciousness, तो अगर हम शरणागत नहीं करेंगे श्रवण नहीं करेंगे अपनी चेतना को शुद्ध नहीं करेंगे don't develop unflinching faith,
अटूट श्रद्धा नहीं पाएंगे, then how are we established in this sambandha jnana? तो कैसे हम इस संबंध ज्ञान में स्थापित हो पाएंगे? Gurudev says, so one should surrender 100% unto the lotus feet of such a guru. गुरुदेव कहते हैं किसी को 100% शरणागत करना चाहिए ऐसे गुरु के चरण कमल में। If you are fortunate enough, you have gotten such a guru, अगर आप भाग्यवान हैं कि आपको ऐसे गुरु मिल पाएंगे, if you surrender unto him 100%, अगर आप उनको 100% शरणागत करेंगे, then you will get the mercy. तब आपको कृपा मिलेगी, Then you are a really fortunate soul. तब आप एक भाग्यवान जीव बन पाएंगे। By the mercy of Krishna, you got such a guru. कृष्ण की कृपा से आपको ऐसे गुरु मिले, And by the mercy of that guru, one gets Krishna. और ऐसे गुरु की कृपा से किसी को कृष्ण And मिलता that है। is all Krishna's arrangement. ये सब कृष्ण की व्यवस्था है। Hare Krishna. So we're devotees. हम भक्त हैं, We just want Krishna Bhakti and want to go back to Godhead. हम केवल कृष्ण भक्ति चाहते हैं, कृष्ण भगवान का Surrender. भक्त चाहते हैं। We're hearing, हम शरणागत कर दिया हमने, हम श्रवण भी कर रहे हैं, offering with love and devotion. Krishna is accepting it. और हम प्रेम और भक्ति से कृष्ण को अर्पण कर रहे हैं, और कृष्ण हमको सब स्वीकार कर रहे हैं। We're assuming an awful lot. तो हम कुछ ज्यादा ही आकलन कर रहे And हैं। why are we assuming that is because we didn't hear the actual science. और क्यों हम ऐसा आकलन कर रहे हैं? क्योंकि हमने असल विज्ञान सुना नहीं है। That's the mystery of disciplic succession. ये है परंपरा का रहस्य। What do you call it? The mystery of what is it? Guru Tattva. The mystery of Guru Tattva. गुरु तत्व का रहस्य। So, any points? Question? कोई प्रश्न है, कोई बात? Didn't I say if you don't surrender, you can't hear anything. तो यहाँ बताया गया कि अगर आप शरणागत नहीं करेंगे तो आप कुछ श्रवण नहीं कर पाएंगे। Even if you're in front of one of that Guru, हो सकता है प्रमाणिक गुरु के सामने रहने लगे, the katha will never enter inside of your ear ये कथा कभी भी आपके कानों के अंदर प्रवेश नहीं करेगी, because the heart and mind is stolen by illusion. हृदय और मन को मोह ने चुरा लिया है। Because we're in the bodily concept of life and we're attracted to gross and subtle material sense gratification लेकिन भौतिक and bodily शारीरिक relations. स्तर की चेतना में हम आकर्षित होते हैं भौतिक इच्छाओं, भौतिक आसक्तियों के प्रति, भौतिक संबंधों के प्रति। That's all Maya. ये सब It's माया all asat. असत है, That means completely contaminated intelligence, mind, and senses. लेकिन पूरी तरह से दूषित मन, बुद्धि और इंद्रियां हैं। So how will transcendental sound, how will Krishna in the form of transcendental sound vibration, how will you perceive it? How will you receive it? तो कैसे कृष्ण जो दिव्य शब्द ध्वनि के माध्यम से हमारे सामने आएंगे, कैसे हम उसको महसूस कर पाएंगे या हम जान पाएंगे? When in the heart we don't really want तो it. हृदय में असल में उनको चाहते ही नहीं है। And Krishna knows. We cannot cheat Krishna. और कृष्ण को ये बात पता है और हम कृष्ण को ठग नहीं सकते। Therefore, whatever you are desiring and attached to, you just get more of that. यानी कि जो भी आपको इच्छाएं हैं, जो आसक्तियां हैं, आपको वही चीज और ज्यादा प्राप्त होगी। So if we don't, David, you look shocked by this information. वो आप बहुत चौंके हुए लग रहे हैं जानकारी से। if we don't have faith, so we need faith in Guru, Sadhu and Shastra so we can surrender. And then when we surrender, then we can actually hear. And then you surrender, then Krishna will enter inside of your ear. So that's the beginning process. That's the beginning. Beginning? Yeah. Yeah. To start the process properly. The what? To start the process properly. Process what? Properly. You speak English? No. He doesn't. What? He doesn't. What? He's not speaking English really. He's not speaking English? Not I thought you were from England. Am I supposed to know the English language? अगर आप इंग्लैंड से हम लोग अंग्रेजी भाषा I'm from America, you know, they don't know English. मैं अमेरिका से वहाँ इंग्लिश नहीं Don't you English people say that? The people from America don't know how to speak English? अंग्रेज लोग कहते हैं कि अमेरिका के लोगों को अंग्रेजी बोलनी नहीं आती है। Right? They're puffed up. इनको इतना अहंकार है। They speak like a low-grade English. कहते हैं नीचे स्तर का अंग्रेजी बोलते हैं। So I forgot my question. so if we don't have, so if our faith, You don't have faith in Krishna. विद्या बता रहे हैं अगर आप कृष्णा में श्रद्धा नहीं है,
Because unless you want Krishna, how you're going to get faith in Krishna? जब तक आप कृष्ण को चाहेंगे नहीं, कैसे आप कृष्ण पर श्रद्धा And then you can say, if you don't have faith in Krishna, how can you want Krishna? कह सकते हैं अगर आपके पास श्रद्धा नहीं है कृष्ण के प्रति, कैसे आप कृष्ण को चाह पाएंगे? So there must be some faith. Otherwise, why are you thinking that you want him? अगर आपके पास कोई श्रद्धा है, आप क्यों सोच रहे हैं कृष्ण? So he must have revealed himself inside or outside through the guru, through the shastra. अवश्य कृष्ण ने हमको प्रकाशित किया है भीतर से, बाहर से, गुरु के माध्यम से, शास्त्र के माध्यम से. That's why Prabhupada was saying yesterday that unless you're very serious about spiritual life, and nobody's really serious about spiritual life, therefore you don't need a guru. प्रभु बता रहे थे अगर आप आध्यात्मिक जीवन के प्रति गंभीर होते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग आध्यात्मिक जीवन के प्रति गंभीर नहीं है, इसका मतलब आपको गुरु की कोई जरूरत नहीं है. Otherwise, he says only first-class persons really need a guru. केवल प्रथम श्रेणी के व्यक्ति को गुरु की जरूरत होती है. Otherwise, you're just accepting guru just by social convention or by a fashion statement on spiritual person, I have a guru. वरना आप किसी सामाजिक प्रथा को पालन करने के लिए या किसी तरह के फैशन के लिए गुरु को स्वीकार करें. Pious person. ये एक धार्मिक व्यक्ति है. So Prabhupada was saying, if you don't want to know the absolute truth, if you don't want to perfectly understand, what was it, Brahman, Paramatma, Bhagavan, प्रभु बता रहे अगर आप पूर्ण तरीके से भगवान, परमात्मा, you don't want to understand it and you don't want to surrender there, अगर उसको understand it, समझ के उस समझ को शरणागत नहीं करना चाहते हैं, then you don't need a guru. तो आपको गुरु की कोई जरूरत नहीं है. That's why Prabhupada is emphasizing people, they don't even realize what is the necessity of the guru, what's the purpose of the guru. प्रभुपाद यहाँ जोर दे रहे हैं कि लोगों को पता ही नहीं है गुरु का उद्देश्य क्या होता है, गुरु की जरूरत क्यों होती है. Solve all the problems of the life, right? जीवन के सारे समस्याओं का समाधान करने के लिए. Why are we suffering? क्यों हम दुख में हैं? Right? Why the threefold miseries? क्यों तीन तरह के कष्ट Why the place of birth, death, disease, and old age? क्यों हम जन्म, मृत्यु, बुढ़ापे, बीमारी वाले जगत में हैं, But we're not feeling and perceiving them. लेकिन हम इसको महसूस और अनुभव नहीं कर पा रहे हैं. So if we don't perceive it and feel it and are seriously troubled by that, अगर हम गंभीरता से इसको महसूस नहीं कर रहे हैं और इसकी समस्या को then गंभीरता why से would we महसूस try कर रहे हैं, to look for solution? तो क्यों हम समाधान ढूंढने का प्रयास करेंगे. So if you Prabhupada said, if you don't think you have a problem, you don't need a guru. तो बात कहते हैं अगर आप ये नहीं सोच रहे आपके पास कोई समस्या है तो आपको गुरु की कोई जरूरत नहीं है. Right? So why talk about the solution to the problem if we don't realize that we really have a problem? तो क्यों हम किसी समाधान के बारे में चर्चा करेंगे जब आप सोच ही नहीं रहे आपके पास कोई समस्या है. So what are we talking about? Where are we? क्या बात कर रहे हैं? So our faith initially is contaminated by the modes of nature. So how can we have that faith, that initial faith, when we are under the modes of nature, affected by the modes of nature? Somehow or other you have to have, your soul has to cry for Krishna, has to want Krishna. वो पूछ रहे हैं अगर हमारी श्रद्धा प्रकृति के तीन गुणों से दूषित है तो वो असल श्रद्धा जो शुरुआती श्रद्धा वो कहाँ से मिल पाएगी. तो गुरुदेव ने उत्तर दिया इसी तरह से अगर आपकी आत्मा कृष्ण के लिए गंभीरता से एक निश्चित से रोएगा. And we should realize, oh, my heart is filthy, और हमें देखना I होगा have so many material desires, बहुत so गंदा much material है, attachment. इच्छाएं, भौतिक आसक्तियां हैं. It's all insanity, ये सब it's all पागलपन है, madness, पूरा पागलपन है. it's all obstacle, impediment, ये बहुत बड़ी बाधा है, source बहुत of बड़ी my रुकावट है, suffering. मेरे दुखों का कारण है. So we have to want Krishna more than our so-called material attraction, attachment, and material desires. तो हमें कृष्ण को ज्यादा चाहना होगा हमारे नाम मात्र के भौतिक इच्छाओं और आसक्तियों के बीच में. Because it's just in the beginning, right? So of course there's all these different anattas are there. क्योंकि ये शुरुआती स्तर है तो अवश्य कोई चुनौतियां या भौतिक इच्छाएं हमारे आसपास हैं. But a Shraddha means that Krishna has revealed himself enough to us that we realize it's in our best interest to completely surrender to Krishna. लेकिन अदाउ श्रद्धा का अर्थ है कि आपको इतना साक्षात्कार मिल चुका है कि आपके लिए सबसे श्रेष्ठ होगा कृष्ण को शरणागत करना. And then without Krishna's mercy, how are we going to get purified from these anchors and deep ropes of material desire and material attachment on our own? It's impossible. और बिना कृष्ण की कृपा के ये हमारी भौतिक इच्छाएं आसक्तियां जो मोटी मोटी रस्सियों और जो बड़े लंगर के जो मिट्टी में कीचड़ फंसी है कैसे हम इनको मुक्त कर पाएंगे. That's why we need the Guru. Otherwise, by ourselves, how are we going to get free from all of that? इसीलिए हमें गुरु की जरूरत है वरना स्वयं से हम कैसे इन सारी चीजों से मुक्त हो सकते हैं. So who wants to get free from all of that? लेकिन कौन इन सबसे मुक्त होना चाहता है.
They need a guru. उनको गुरु की They जरूरत need है। mercy from Krishna and mercy from Guru. उनको कृष्ण की कृपा, गुरु की कृपा की जरूरत है। Otherwise, we cannot get free from all of that. वरना हम कभी इन सारी चीजों से मुक्त नहीं हो सकते। So our desire for Krishna and want to surrender and serve Krishna has to be more than whatever so-called material attraction, attachment, or material desires that are also still present there within the contaminated material consciousness. तो हमारी इच्छा कृष्ण को पाने की, कृष्ण को शरणागत करने की, कृष्ण की सेवा करने की इतनी मजबूत होनी चाहिए भौतिक इच्छाओं, आसक्तियों, कलमशों के बीच में। What do you think? क्या सोचते हैं आप? He's smiling. Krishna must have told you something. ये हंस रहे हैं, अवश्य कृष्ण ने कुछ बताया होगा। So it seems that everything is based on desire, and the desire to want Krishna should be more than material desires. Yeah. So the conditioned soul. And don't we say Krishna, he's the witness and he's the judge of what you really want? तो वो कह रहे हैं कि हमारी इच्छा होनी चाहिए कृष्ण को पाने की, हमारी भौतिक इच्छाओं और उनके सबसे ज्यादा हमें कृष्ण को पाने की इच्छा है। तो गुरुदेव ने बताया और कृष्ण उसके गवाह भी हैं, उसके न्यायकर्ता भी हैं, वो देखते हैं हमारी इच्छाओं को। So how badly does your soul want Krishna? तो आपके आत्मा कितनी बुरी तरह से कृष्ण को पाना And चाहता है। naturally, the material body is always wanting Maya. और स्वाभाविक रूप से भौतिक शरीर सदैव माया की इच्छा करता है। So material mind and senses is always attracted and wanting, desiring Maya. भौतिक मन, इंद्रिय सदैव माया, भौतिक चीजों की कामनाएं करता है। So is our desire on the soul platform more than the intensity of the material senses, mind and senses towards materialism? तो हमारी आत्मा की इच्छा कृष्ण को पाने की, हमारी भौतिक इच्छा जो मन और इंद्रियों के संयम के नियंत्रण में है, उससे ज्यादा है हमारी आत्मा की इच्छा। And then if we don't want Krishna enough, then why will we be asking, please purify me from these material attraction, material attachment, material desires? Because that's an impediment, an obstacle from us being able to surrender to Krishna. अगर हम असल में कृष्ण को चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, तो क्यों हम कृष्ण से कहेंगे मुझे शुद्ध कीजिए, मुझे मुक्त कीजिए भौतिक इच्छाओं, आसक्तियों से जो मेरे रास्ते में रुकावट बना हुआ है आपकी सेवा करने के लिए। So if you know that all of this material desire, material attachment, this is the very source of our suffering condition. This is why we're suffering. अगर आप समझ पा रहे हैं भौतिक इच्छाएं, आसक्ति या फिर सारी समस्याओं का जड़ कारण है, इसी वजह से हम सारे दुखों में हैं। Right? We're coming to realize when we're surrendering to Krishna, we're getting hammered, pounded by sinful reactions. हम समझ पा रहे हैं कि कृष्ण को शरणागत करने के लिए आ रहे हैं, हमें पाप कर्म के फलों से इतनी मार पड़ी है, That's where all the suffering is coming. वहीं से सारा दुख आ रहा है। So if you ask, why am I suffering like this? तो अगर हम सवाल उठाएंगे क्यों मैं इस तरह से Because दुख में हूं? you're maintaining materialistic, sinful thoughts and desires and plans. क्योंकि आप बनाए हुए हैं पाप करने की इच्छाओं, आसक्तियों और योजनाओं को। So if we want to get freed from that suffering condition, from that cycle, that means that those desires have to be given up. यानी कि अगर हम इस चक्र से बाहर निकलना चाहते हैं, दुखों से, कष्ट से निकलना चाहते हैं, यानी कि इच्छाओं को हमें त्याग करना होगा। And then how badly do we want to give up all these material desires, material attraction, material attachment? We're not strong enough. और कितनी बुरी तरह से भौतिक इच्छाओं, भौतिक आसक्तियों को हम त्याग करना चाहते हैं, हम इतने शक्तिशाली नहीं हैं उसको त्याग कर पाएंगे, Because we're too attached. क्योंकि हम बहुत ज्यादा आसक्त हैं हमसे। Isn't it? ऐसा है या नहीं? So do you think Krishna doesn't understand what is our predicament? तो What is our dilemma? तो क्या आपको नहीं लगता है कि कृष्ण को पता है हमारी क्या दुविधाएं हैं? And we should understand it. और हमें इसको How can I समझना surrender to Krishna as long as I'm being dragged down and attracted and attached, on material public platform? और हमें ये बस अनुभव करना चाहिए कैसे मैं कृष्ण को शरणागत कर पाऊँ अगर ये भौतिक इच्छाएं मुझे घसीट रही है, मुझे अपनी तरफ आकर्षित कर रही है और मुझे अपनी तरफ So unless Krishna, Guru and Krishna purify the strength of these materialistic attachments and materialistic desires, I'm not going to be able to properly surrender to Krishna. तो जब तक कृष्ण इन भौतिक इच्छाओं और आसक्तियों की शक्ति को खत्म नहीं करेंगे तब तक मैं सही तरीके से शरणागत और कृष्ण की सेवा नहीं कर पाऊंगा। So what do we want? Do we want Krishna or do we want Maya? हम क्या चाहते हैं, कृष्ण को चाहते हैं या माया को चाहते हैं? That's the test. ये है परीक्षा। So when we realize how badly we're suffering condition, जब हम देख पाएंगे हम कितनी बुरी तरह से दुख भोग रहे हैं, and we know this is because of uncontrolled mind and senses, और जब हम जान पाएंगे ये हमारे अनियंत्रित मन और इंद्रियों की वजह से हो रहा है, trying to enjoy separately from Krishna and material in Maya, और हम कृष्ण से अलग होकर भौतिक तरीके से माया में आनंद भोगने का प्रयास कर रहे हैं,
that so-called happiness is the cause of our future suffering condition. ये नाम मात्र का सुख ही हमारे भविष्य के सारे दुखों का कारण बनेगा। So if we realize that, अगर हम इसका अनुभव करते then हैं we'll understand that that's actually not an option to maintain these material desires, material attachments. तो हम समझ पाएंगे असल में कोई सही विकल्प नहीं है भौतिक इच्छाओं और आसक्तियों को बनाए रखना। It's not that life, that lifestyle, that cycle, that future. It's for an intelligent person. Krishna says this is not. It's not an option. It has to be given up. तो ये जीवन शैली, ये चक्र, इस तरह का जीवन कोई बुद्धिमान चतुर मनुष्य के लिए नहीं है और वो उसको त्याग करने का प्रयास करेगा। Now, can we just give it up? लेकिन क्या हम उसको त्याग कर पा रहे हैं? I'm not attracted. I'm not attached. मैं आकर्षित नहीं होगा, मैं आसक्त नहीं होगा। It's so deep rooted. ये बहुत गहराई है हमारे अंदर। It's like almost impossible. लगभग असंभव है। That's why Krishna says to get out of Maya, it's insurmountable. इसलिए कृष्ण बताते हैं माया से बाहर निकल पाना लगभग असंभव है। But if we realize I have to get out of Maya because it's not an option. इसलिए अगर हम समझ पाते हैं हमें माया से बाहर जाना ही होगा क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कोई विकल्प नहीं। Because it's too painful, it's too much suffering platform. बहुत ज़्यादा दर्दनाक, बहुत ज़्यादा दुखमय स्थिति है वो। And it's useless. और ये पूरी तरह बेकार है। Now you need a guru. तब आपको गुरु की Now जरूरत you need Krishna's है। तब mercy. आपको कृष्ण की कृपा की Because जरूरत on है। our own, how are you going to get free from all of that? क्योंकि अपने स्वयं की क्षमता से कैसे आप इन सारी चीजों से मुक्त हो सकते हैं? How are you going to give up all of that? कैसे आप इन सबको त्याग कर पाएंगे? All the ropes, all the anchors. सारी रस्सियां, सारे And लंगर। if we don't give that up, again, birth, death, disease, old age. अगर हम इसको त्याग नहीं करेंगे, फिर से जन्म, मृत्यु, Again, threefold miseries. फिर से तीन तरह के कष्ट In the Kali Yuga, कलयुग में। that's the future. ये है भविष्य। That means we've come to the realization that even in this life, that's not an option. यानी कि हम इस जीवन में भी अपने साक्षात्कार के इस जीवन में भी मेरे पास This कोई must be uprooted. इसको अवश्य जड़ से उखाड़ना होगा। If we're not thinking like that, then we don't really want to be devoted. अगर हम इस तरह से सोच नहीं रहे हैं, इसका मतलब हम भक्त नहीं बनना चाहते हैं। We don't really want to surrender to Krishna. हम असल में कृष्ण को शरणागत नहीं करना चाहते हैं। So what was your question? तो क्या प्रश्न था आपका? Sometimes I get distracted. कभी-कभी मैं थोड़ा भटक जाता हूँ। Because Krishna says 4 kinds of people come to him, and then Prabhupada is saying in that purport that if one has association of pure devotee, then by hearing, then one develops more stronger spiritual desire. Yeah, but if you don't surrender there and you don't hear him and you don't follow his instructions, how do you get mercy from pure devotees? तो प्रभु बता रहे हैं 4 तरह के लोग कृष्ण के पास आते हैं और अगर शुद्ध पद का संग पाते हैं तो उसे श्रवण करके वो भौतिक इच्छा आ सकती है तो शुद्ध हो जाते हैं। तो गुरुदेव बता रहे हैं लेकिन अगर आप शरणागत नहीं करेंगे, आप सुन नहीं पाएंगे, शुद्ध नहीं कर पाएंगे और तब आप गुरु के निर्देश का पालन नहीं करेंगे, कैसे आपको कृष्ण की कृपा मिलेगी? So Dhruva Maharaj, he had complete faith in Krishna, तो ध्रुव महाराज को कृष्ण में पूर्ण श्रद्धा थी, but he had material desire. लेकिन उनके अंदर भौतिक इच्छाएं थी। But Krishna is very kind, very merciful, लेकिन कृष्ण बहुत दयालु, बहुत and he कृपालु gave him pure devotee Brahmara as his guru. लेकिन उन्होंने उनको शुद्ध भक्त परंपरा में गुरु के रूप में दिया And then he gave instruction, और फिर उन्होंने उनको निर्देश दिए and Dhruva Maharaj followed the instruction to the best of his ability. और ध्रुव महाराज ने उन निर्देशों को अपनी श्रेष्ठ क्षमता से पालन किया And because of pleasing the spiritual master is also praying on his behalf. और उन्होंने आध्यात्मिक गुरु को प्रसन्न किया तो आध्यात्मिक गुरु ने उनके And तरफ he से combined mercy of Guru and Krishna, तो उनको गुरु और कृष्ण की मिली-जुली कृपा मिली and then this strength of material desire, material attachment, gradually it becomes destroyed. और ये भौतिक इच्छाओं आसक्तियों की शक्ति धीरे-धीरे नष्ट हो गई। Then you can nicely hear, then you get the spiritual taste, तब वो अच्छे से श्रवण कर सकते हैं, आध्यात्मिक स्वाद पा सकते then हैं the nectar starts to flow on spiritual platform, और जब अमृत आध्यात्मिक स्तर से बहने लगेगा and then you compare that to your so-called material pleasure. और तब उसको आप तुलना करेंगे अपने नाम मात्र के She भौतिक says सुख you के get a साथ। higher taste, and you can let go of the lower taste. जब आपको ऊंचा स्वाद मिलेगा तो आप नीचे के स्वाद को त्याग कर पाएंगे। So what does it mean to associate with pure devotee? तो शुद्ध भक्त का संग करने का अर्थ क्या होता है? It means to hear from them. उनसे इसका मतलब उनसे श्रवण करना। What is your definition of association with a pure devotee? शुद्ध भक्त का संग करने की क्या परिभाषा आप देते हैं? So you just follow the instructions, somehow or other you try to please pure devotee?
तो उनके निर्देश का पालन करके उनको सुखी करने का प्रयास कीजिए शुद्ध भक्ति को। Even if you have some desire. हो सकता है आपके अंदर कोई इच्छाएं हो। Right? By the end, Dhruva Maharaj didn't want the fulfillment of his material desire. अंत में ध्रुव महाराज इन कौन सी भौतिक इच्छाओं का पूरा नहीं करना चाहते Because he got a higher taste. क्योंकि उनको ऊंचा स्वाद मिल गया। They got bhakti, Krishna bhakti. उनके भक्ति कृष्ण भक्ति में। So what's the question? तो क्या प्रश्न है? What's the dilemma? क्या दुविधा है? Because we can only like strengthen the strength of our desire by hearing, and it was said that unless one completely surrenders, one cannot hear. So, like how a conditioned soul is. If he didn't hear, put faith in the Guru's instruction, तो वो कह रहे हैं कि अगर किसी को पूर्ण श्रद्धा नहीं मिलेगी तो और पूर्ण शरणागत नहीं करेंगे तो कभी श्रवण नहीं कर पाएंगे। तो गुरुदेव ने उत्तर दिया, अगर आपको श्रद्धा नहीं मिलेगी और अगर आप शरणागत नहीं कर पाते हैं, then part of that instruction is to chant holy name. तो उस निर्देश का एक और भाग है भगवान कृष्ण के नाम का। So you're thinking, okay, how do I do this for the pleasure of Guru and Krishna? तो वो सोच रहे हैं कैसे मैं इसे गुरु और कृष्ण Follow की his प्रसन्नता के लिए कर instructions. पाऊँ, I need his mercy. मैं कैसे निर्देश का पालन कर पाऊँ, मुझे उनकी कृपा की जरूरत है। Then gradually, you get purified. तो धीरे धीरे आप शुद्ध होंगे। This is for one who wants Krishna prema. ये निर्देश उनके लिए है जिन्हें कृष्ण प्रेम चाहिए। Gurudev said that the others are giving sadhana, गुरुदेव बता रहे थे अन्य लोग साधना के बारे I'm में giving sadhya. मैं सत्य दे रहा हूँ। So this is how to get and reach the conclusion. तो ये वो तरीका है जिसके माध्यम से आप निष्कर्ष तक पहुँच सकते हैं। So Prabhupada said, anyway, if you're sitting in the room somehow or other, it's hitting your ear, you'll get some benefit. प्रभात कहते हैं अगर आप कमरे में बैठे हैं किसी तरह से अगर कान आपके कानों से टकराएगा तो कुछ लाभ अवश्य मिलेगा। Something. Not that you'll not get anything, ऐसा नहीं कि आपको कुछ भी लाभ नहीं मिलने वाला, but it's small. लेकिन बहुत ही छोटा होगा। Just because you're lucky enough to be sitting in the room, you might hear something. तो इतने भाग्यशाली हैं कि आप कमरे में मौजूद रह पाए तो आप कुछ श्रवण करेंगे। Gurudev was giving that example of the, was it the camel? Right? Or the donkey, right, carrying the sandalwood on the back. और ये उदाहरण देते हैं कि उस गधे का जो अपने पीठ पर चंदन की लकड़ी लाद के ले जा रहा था। So he's just an ass वो केवल एक गधा है carrying the sandalwood. तो चंदन की लकड़ी And then one day, all of a sudden, the sandalwood smell, और एक दिन किसी से ये चंदन की लकड़ी की गंध or Ambarish's incense, या बड़ी सी अगरबत्तियों की गंध just goes up the nostril. उनके नाक में प्रवेश करता है। He's just in the right place at the right time. तो सही समय में सही जगह पे Get some causeless mercy. उसको चाहे तो कुछ कृपा मिली। So it's not all or nothing. ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं मिलेगा या But if सब you कुछ do मिलेगा। this seriously, attentively, लेकिन अगर आप इसे गंभीरता से ध्यानपूर्वक पूरे सही उद्देश्य से करेंगे then you get everything. तब आपको सब कुछ मिल जाएगा। That example is there. Bhaktivinoda Thakur says the man who has like 5 sons, श्रील भक्तिविनोद ठाकुर उदाहरण देते हैं जैसे किसी व्यक्ति के पास 5 बेटे थे। and then the father, who's leaving his body, he has to leave some inheritance to his sons. तो पिता जब अपना शरीर त्याग करने वाले थे अपने बेटों के लिए कुछ संपत्ति छोड़ना चाहते So he'd rather leave it to the most serious, dedicated, qualified son. तो वो उसके हाथ में छोड़ेंगे जो सबसे ज्यादा समर्पित सबसे ज्यादा योग्य बेटा है। So he may give something to the other ones, तो वो कुछ चीजें बाकी लोगों को दे देंगे but he'll give the bulk of it, of the inheritance, to the one who's most qualified. लेकिन वो सबसे ज्यादा अपनी संपत्ति उनको देंगे जो सबसे ज्यादा योग्यवान है उसको Because संभालने they deserve it. क्योंकि वो उसके लायक है। So you want a little something, तो आपको थोड़ा थोड़ा कुछ चाहिए you're satisfied with that? आप उससे संतुष्ट हैं Or do you want full inheritance? या आपको पूरी संपत्ति चाहिए। So do you want to make snail's pace? तो आप घोड़े की तरह आगे बढ़ना चाहते हैं Or do you want the Garuda pace? या गरुड़ की गति से आप आगे बढ़ना चाहते हैं। Buddhism. गुरुदेव ऐसा कहते हैं। Does that help you? क्या आपकी मदद हुई? What's the dilemma? क्या दुविधा है आपकी? As you surrender, I reward you accordingly. जैसे आप मुझे शरणागत करेंगे मैं वैसे ही आपको फल दूंगा। This is talking how to get the full reward. ये वो माध्यम है जहाँ बात की जा रही है If कैसे you want to do something, then you get rewarded accordingly. अगर आप कुछ चीजें चाहते हैं तो आपको वैसा ही लाभ मिलेगा।
Yeah. So to the extent we actually desire Krishna, Now everyone's using words like actually, seriously, really, अब सब लोग इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं असल में तत्व में सत्य में you guys learn fast now. बहुत तेजी से सीख रहे हैं सभी Now we gotta get your tattva vichar theoretical understanding. अब आप लोग तत्व विचार का मौखिक ज्ञान मिला है It's just a higher level of, mental speculation. ये और ऊंचे स्तर का मनोरंजन है We just expanded your, what is it, the theoretical understanding. हमने अपने मौखिक समझ को ये थोड़ा और फैला दिया है Even that's not good enough. वो भी पर्याप्त नहीं है You just came to know that there's another level of theoretical understanding. आप बस समझ पाए कि एक और अगले स्तर का मौखिक समझ भी है There's a thing called tattva vichar and a thing called the par vichar. एक चीज है जो तत्व विचार कहलाती है दूसरा है अपार विचार कहलाता But it doesn't make it realized. है लेकिन इसका मतलब ये नहीं अपने सारा साक्षात्कार कर लिया Right? Just like we know that there's a thing called prem bhakti, जैसे हम जानते हैं कि कोई बात कोई चीज है प्रेम it भक्ति doesn't mean we understand it or that we've qualified ourselves for it. इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको समझ के उसके लिए प्रति योग्य बन चुके हैं And you thought that tattva vichar meant absolute. और आप सोचते थे तत्व विचार का मतलब होता है जो परम होता है Sorry to disappoint you. क्षमा कीजिए आपको निराश करने के लिए Are we hearing it on material platform? तो क्या With हम material mind, intelligence, and senses? Then it's theoretical. तो अगर हम भौतिक स्तर का श्रवण कर रहे हैं भौतिक मन बुद्धि इंद्रियों से तो ये मौखिक If you है get mercy of Krishna, mercy of Guru, तो अगर आपको कृष्ण की कृपा you गुरु की कृपा purify your mind and senses, अपने मन बुद्धि give you इंद्रियों को शुद्ध करने divine के ears and senses, then you can get right of hearing Krishna directly. तो आपको दिव्य नेत्र दिव्य इंद्रियां प्राप्त होती है तो आपको अधिकार मिलेगा सीधे सीधे कृष्ण को श्रवण करने का Then you practically understand what is tattva vichar, तब आप व्यवहारिक रूप से जान पाएंगे तत्व विचार क्या होता है not theoretically. बस मौखिक रूप से नहीं जानेंगे He is real disciple, so he inherits that right of hearing from such a guru. तो वो असल शिष्य है तो इसीलिए वो गुरु से श्रवण का अधिकार प्राप्त करता है And one who understands this thing very well. और जो ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पाता है What does that mean? One who understands this thing very well. इस शब्द का क्या अर्थ है कोई इसको अगर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाता है In tattva, इसका मतलब तत्व में समझ पाता है by hearing from such a guru, ऐसे गुरु से श्रवण करके by the mercy of that guru, ऐसे गुरु की कृपा से he's real disciple. वो एक असल शिष्य बनता है He's real servant. असल दास बनता है That's the proof that you got mercy from Krishna and Shri Guru. ये प्रमाण है आपको कृष्ण से श्री गुरु और परंपरा से कृपा Because you got the right of hearing by their mercy. क्योंकि आपको श्रवण का अधिकार मिला उनकी कृपा Therefore से you understand it and realize it very, very well और in इसलिए आप tattva. इसको समझते हैं इसको साक्षात्कार करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से तत्व में And Guru knows that और गुरु इस बात को जानते हैं in whose ear this kathar is entering. इसके कानों में ये कथा प्रवेश कर रही है And when he sees, oh, this kathar is entering into this person's ear, he's a real disciple, he's understood it, then it's okay, now go preach it. और जब गुरु देख पाते हैं कि इसके कानों में ये कथा प्रवेश कर पा रही है ये असल शिष्य है तो वो उनको आदेश देते हैं कि अब तुम जाओ और इसका प्रचार करो Otherwise, what are you going to preach? वरना आप क्या प्रचार करेंगे If Krishna doesn't go in, Krishna can't go out. अगर कृष्ण आपके अंदर प्रवेश नहीं किया तो कृष्ण आपसे बाहर भी नहीं आएंगे Simple. बहुत सरल है They said it's coming in one pipe and going out the other pipe. गुरु बताते थे एक पाइप से घुस रहा है और दूसरी पाइप से बाहर I'm just a mere pipe. मैं केवल एक पाइप हूँ The reservoir water is there, तो पानी का it's भंडार going है in one pipe and going out other pipe. एक पाइप से घुस के दूसरे पाइप से निकल रहा That means pure by a medium of Krishna. है मतलब कृष्ण के शुद्ध नाम So if Krishna doesn't enter in, अगर कृष्ण भीतर प्रवेश नहीं करेंगे and you don't realize it, you don't realize the benefit of that, अगर आप उसका साक्षात्कार करके उसका लाभ नहीं देख पाएंगे then what have you understood? तो जो भी आप समझेंगे And then what will you present? और फिर आप क्या प्रस्तुत करेंगे Will it just be theoretical presentation? आपकी प्रस्तुति केवल मौखिक होगी Or will it be
understanding this thing very, very well in या tattva. फिर बहुत ही बहुत अच्छे तरीके से समझ के तत्व में प्रस्तुत कर पाएंगे। That's the question. ये है प्रश्न। I'll try to listen very closely. बहुत ही सावधानी से इस को सुनने का प्रयास करेंगे। It's not a question, I just wanted to repeat for my... You want to what? I just wanted to repeat, just for my... You want to repeat it? You want to hear yourself repeat it? Let's see how much you even theoretically can understand. चलिए हम देखते हैं कि आपने मौखिक तरीके से इसको समझा है नहीं, दोहरा पाएंगे कि नहीं आप मेरी बात। Many times I ask devotee, repeat what I just said to you. कई बार मैं भक्तों से कहता हूँ कि दोहराओ जो इस तरह मैंने कहा। And then they repeat it and say, I didn't say that. और फिर वो दोहराते हैं, मैं कहता हूँ मैंने ऐसे कहा ही नहीं था। I did that with Sanatan all the time. मैं सनातन के साथ ही She हमेशा says, कहता हूँ, yes, 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 yes. ये कहते हैं हाँ, हाँ, Okay. मैं कहता हूँ ठीक है सर। Before you leave, जाने से पहले tell me, without adding or subtracting anything, what did I just say to you? बिना कुछ जोड़े बिना कुछ घटाए तो मुझे बताओ कि मैंने तुम्हें क्या क्या बताया। And then he confidently says, I didn't say that to you. पूरे आत्मविश्वास से मुझे कहता है, मैं कहता हूँ मैंने कोई नहीं कहा था आपसे। Then, oh, what were you saying? और फिर वो कहते हैं कि आप क्या Let's कह say रहे that again. हैं? और चलिए हम फिर से सुनते हैं। So we can't even understand it materially हम इसको भौतिक तरीके से भी समझ नहीं पा रहे हैं। in many cases. कई सारे What to speak of spiritual? तो आध्यात्मिक स्तर पे कैसे क्या कहना? So first perfect your theoretical understanding. पहले से मौखिक ज्ञान को पूर्ण बनाइए। That's a goal, right? Let's at least let your theoretical understanding be absolutely correct. और ये लक्ष्य है कम से कम अपने मौखिक ज्ञान को पूर्ण रूप से सही साबित करके दिखाइए। Now, how do you make that theoretical understanding absolutely understood? तो कैसे आप उस मौखिक ज्ञान को आप पूर्ण तरीके से साक्षात करके समझ कर पाएंगे? That's the next step. ये अगला कदम है। Higher level of theoretical understanding, ऊंचे स्तर का मौखिक ज्ञान and then now just more, understanding it absolutely. और तब उसको और हम परम सत्य के आधार पर जान पाएंगे। Otherwise, why would the Guru send out a speculator? When I wanted to go out and speculate, he didn't let me go. तो क्यों गुरुदेव किसी मनोधर्मी को भेजेंगे? क्योंकि जब मैं मनोधर्म करना चाहता था बाहर जाके तो गुरुदेव ने मुझे जाने नहीं दिया। I want to go preaching and Mahaprabhu's mission. I got to spread Krishna consciousness. तो महाप्रभु प्रचार आंदोलन में प्रचार करना चाहता हूँ, मैं उनके प्रचार को बढ़ाना चाहता हूँ। It all sounds really, really good, right? सुनने में बहुत अच्छा लगता है। But Guru said, but if you don't understand it, गुरुदेव ने कहा तुम उसको समझो, you don't realize it, उसको साक्षात्कार नहीं करोगे, then you'll just be spreading your misconception, तुम केवल अपनी गलत फहमियों का प्रचार करोगे, and that won't really help और anybody. ये किसी की मदद नहीं So करेगा। first, understand it, तो पहले समझो, realize it, साक्षात्कार करो, then eventually Guru Krishna will make arrangement for you to speak it. तब फिर गुरु कृष्ण आपके लिए व्यवस्था करेंगे तो आप उसको बोल पाएंगे। The mystery of Guru Tattva. गुरु तत्व का रहस्य। This is going to be very interesting. ये बहुत दिलचस्प होने वाला है। This is very interesting. बहुत दिलचस्प है वो। We're going right in the front lines, right? हम सबसे आगे के रैंक लाइन पे जा रहे हैं। पहले That'll वाला be very fun, very interesting. बहुत मजेदार होने वाला है, बहुत दिलचस्प होने वाला है। What happened? क्या हुआ? Are you cold? क्या आपको ठंड लग रही है? He was saying mic little less sound. It's too loud? Oh, it's too loud for him? ज़्यादा आपको आवाज़ आ रही है? Am I talking too loud? क्या मैं ज़्यादा जोर से बातें कर रहा हूँ? He's a musician, so he's very keen on sound. तो वो एक संगीतकार है, जिनको जो शब्दों में बहुत ही गहराई से जान पाते हैं। The ear is trained like that. उनके कान इस तरह से प्रशिक्षण लिया हुआ है। So whatever you're focused on, you're going to become more and more professional. जिस चीज़ पे आप ध्यान लगाएंगे, उसी पे आप उतना ज़्यादा से ज़्यादा पेशेवर बनते जाएंगे। Then you're speaking out of realization, not theoretical. तो आप साक्षात्कार से बोल पाएंगे, एक मौखिक स्तर से नहीं। So, all right, let's hear you repeat it. चलिए सुनते हैं आप कैसे दोहरा पाते हैं। So to the extent we desire Krishna based
on the reality, understanding what we don't want from the matter world, or the So what we want Krishna. yeah. We have to be sincere and serious. Yeah, based on understanding of opposition in the matter world. Based on opposition? No, opposition. Opposition? Yeah, in relation with the matter world, material energy, or the problems. I need one of these like sign people. मुझे इसे संकेत दिखाने वाले लोग चाहिए ताकि मैं समझ सकूं कि बात United Nations, I need one of those earpieces. संयुक्त राष्ट्र में इस तरह की कहानियां को लगाया जाता है. And then the guy saying one thing, and like the CIA guy is saying, some other thing. You're like, what? तो वो एक चीज कह रहे हैं और संयुक्त राष्ट्र में CIA के एजेंट जो कुछ अलग बात बता रहे हैं. The guy is like saying, we want world peace and love and affection, and then the CIA guy saying, we're going to nuke you. This is what we want, we're going to blow you up. हम विश्व शांति करना चाहते हैं और CIA उसका अनुवाद ऐसे कर रहा है, हम आपको परमाणु बम से उड़ा देंगे, अगर हमें वो चीजें नहीं देंगे आप लोगों And he's saying it like in a very sweet way, वो इतनी And then they say, he's crazy, This guy's crazy. और ये लोग पागल हैं. How do you threaten someone with a nuke and smile about it? कैसे आप किसी को परमाणु बम से धमकी दे रहे हैं और उस पर हंस भी रहे हैं? Doesn't make sense. इससे कोई मतलब नहीं बनता. So, where are we? तो हम कहाँ हैं? Do you think if you hear yourself try to repeat it, you'll understand it better? तो आप सोचते हैं कि आप जब दोहराने का प्रयास करेंगे और खुद उसको सुनेंगे तो Or आप you ज़्यादा बेहतर test समझ it पाएंगे. yourself? तो आप खुद की परीक्षा ले रहे हैं. Don't I tell Debbie sometimes, what do I usually say? Like, If say, you will repeat that, you will understand it better, and if you write it down, you will own it. yeah. कहने के बाद Why do you think I'm so strong in my understanding and presentation? Because I've said this hundreds, thousands of times. तो मुझे बताएं आपको क्यों ऐसा लगता है कि मुझे इतना आत्मविश्वास है अपनी प्रस्तुति में, क्योंकि मैंने इसको हजारों बार इसको कहा है इन सारे शब्दों. It gets stronger and stronger and stronger because that's the only thing I'm seeing. ये और ज़्यादा शक्तिशाली मजबूत हो जाता है क्योंकि यही है एकमात्र चीज जो मैं हर जगह देखता हूँ. And then how I found this, article is like, it's not like a mistake. It's not coincidence. और कैसे मुझे ये लेख मिला, ये किसी तरह का संयोग या गलती से मुझे नहीं मिला. Because it speaks about everything. क्योंकि ये वो सारी बातों को बता रहा है. Guru, qualification of the Guru, गुरु की योग्यताओं के बारे में, qualification of the disciple, शिष्य की योग्यताओं के बारे में, what is the process, और प्रक्रिया क्या है, what is the effect of hearing. श्रवण का क्या प्रभाव होता है. Everything is there सब कुछ यहाँ मौजूद है. in a very, condensed way. There's no बहुत ही गाढ़े तरीके से. It's all based on hearing. ये सब श्रवण पे आधारित है. But this point that came out also by Prahlad Maharaj, unless you surrender, how are you going to hear? लेकिन प्रहलाद महाराज ने ये बात भी सामने लाई, जब तक आप शरणागत नहीं करेंगे तब तक आप कैसे श्रवण कर पाएंगे. And then we were saying, if we don't have intelligence and faith from Krishna, then why would you surrender? और हम कह रहे हैं कि अगर आपको बुद्धि और श्रद्धा नहीं मिलेगी कृष्ण से, तो क्यों आप शरणागत करेंगे, कैसे आप शरणागत करेंगे. And you just like sentimentally, blindly surrender? क्या आप भावुकता से और अंधे होकर शरणागत कर पाएंगे. Shouldn't it be done with perfect intelligence and faith and knowledge from Krishna? एक पूर्ण ज्ञान, बुद्धि और श्रद्धा कृष्ण से प्राप्त होकर नहीं करना चाहिए. My Gurudev used to say, for people who have gurus that fell down, they would come to Srila Govinda Maharaj. तो मेरे गुरुदेव श्री गौरव महाराज के पास बहुत सारे शिष्य जिनके गुरु का पतन हो चुका था, वो लोग उनके पास आते थे. And he would say, you see, you just accepted this person because everyone said he was pure devotee. और मेरे गुरुदेव ने उनको बताया कि आपने उन लोगों को स्वीकार किया गुरु के रूप में, क्योंकि बाकी लोग कह रहे थे वो शुद्ध भक्त है. So if you have like a bunch of social, conditioned souls saying he's a pure devotee and you don't understand how to get intelligence from Krishna, intelligence and faith, how do you understand whether he's pure devotee or not? तो
तो कुछ आप बद्ध जीवात्माओं सामाजिक लोगों से आपने सुना कि वो शुद्ध भक्त हैं, लेकिन कृष्णा से अपने बुद्धि या कैसे स्रोत मिल पाएगा कृष्णा से बुद्धि और श्रद्धा, ये आपने चिंता नहीं की। And then without, Gurudev here is talking about what is a real disciple. और गुरुदेव बात कर रहे हैं असल शिष्य क्या होते हैं। So is this person really a disciple? Is he really surrendered? तो क्या ये व्यक्ति असल में To that Guru, previous Acharya? असल में शिष्य है और उन्होंने शरणागत किया है श्री गौरव महाराज को जो पूर्व आचार्य हैं। So if we don't become real disciple, तो अगर हम असल शिष्य नहीं बनते हैं, then how can we be real Guru? तो कैसे हम असल गुरु बन पाएंगे? Right? The whole point is how to get everyone mercy, right? And if we can't get mercy, then I'm going to help you to get mercy. तो पूरी प्रक्रिया कृपा पे आधारित है। अगर मैं खुद कृपा पाना नहीं जानता तो कैसे मैं आपको सिखाऊं कैसे कृपा पाई जाती है? It's all based on mercy, सब right? कुछ कृपा पे आधारित है या नहीं? So he's a real disciple who inherits and receives this right of hearing. वो असल शिष्य है जो प्राप्त करता है ये श्रवण के अधिकार को। So how do you know who has inherited and received the right of hearing? तो कैसे पता चलेगा किसी को संपत्ति मिली है या श्रवण का अधिकार मिला है? One who understands this thing very well in tattva, जो इनको बहुत अच्छी तरीके से तत्वों में समझता है by hearing from such a bona fide guru. ऐसे प्रामाणिक गुरु से श्रवण करके। So only the bona fide guru can understand who's actually heard it and understands it. तो केवल realizes प्रामाणिक गुरु समझ पाते हैं कौन किसने इसको असल में सुना, इसको समझा और इसका साक्षात्कार किया। Otherwise, the guru is going to send you out with the theoretical understanding to just fire more blank, what's it called? Like no bullets, right? Blank fire. वरना कैसे गुरु किसी ऐसे मौखिक ज्ञान प्राप्त व्यक्ति को भेजेंगे जो केवल मौखिक ज्ञान दे सकता है, उसको बंदूक चलाएंगे लेकिन कोई गोली नहीं होगी। So the whole teaching, the whole purpose, the whole emphasis, the whole mission is to establish absolutely what is Krishna, who is Krishna, what is the whole process, right? And now he's just going to send someone out with some kind of theoretical understanding to fire, blank, fire with no bullets. तो पूरी प्रक्रिया आधारित है कैसे कृष्णा को गुरु को सारे बातों को स्थापित किया जाएगा। तो किसी के पास अगर मौखिक ज्ञान है तो गुरु किसी ऐसे व्यक्ति को भेजेंगे सत्य को स्थापित करने के लिए। And then who's conversant with it? और कौन इन सारे ज्ञान के प्रति पूर्ण रूप से जानकार है? Someone is being asked all the questions on the topic, right? We're immediately answering it. अगर कोई भी हमें इन विषयों के ऊपर प्रश्न कर रहा है, हम तुरंत उनके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। If you don't realize that you're not conversant with it, how you can do that? तो अगर आपने इसका साक्षात्कार नहीं किया है, पूर्ण जानकार नहीं है, तो कैसे आप इनके प्रश्न को उत्तर Like, well, the Shastric Advisory Committee, they're working on that right now. Within a couple of months, we'll get the latest version of the absolute truth. तो शास्त्रीय सलाहकार समिति इसके ऊपर भी चर्चा कर रही है और जो अभी तुरंत हाल फिलहाल में जो सत्य बाहर लाया जाएगा उसे हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। What is the latest version of the absolute truth? अभी हाल फिलहाल में जो नया वर्जन आया है परम सत्य का वो क्या है? And then where does it say anywhere about Shastric Advisory Committee to understand the absolute truth? और कहाँ कहीं भी शास्त्र में बताया गया कि शास्त्रीय सलाहकार समिति की जरूरत पड़ेगी परम सत्य को जानने के लिए। Whereas any previous acharya say, well, I got a group of scholars, they're scouring the books and they're trying to understand the absolute truth, and they'll inform me. And believe me, you'll be the first person that I inform after I hear it and understand it. तो कहाँ किसी पूर्वाचार्य ने ये कहा है कि मेरे पास एक विद्वानों का ग्रुप है शास्त्रीय सलाहकार समिति और जो सारे शास्त्रों को खोजबीन कर रहे हैं तत्व को जानने के लिए, और जब वो तत्व जानेंगे, जब मुझे बताएंगे तो आप सबसे पहले व्यक्ति होंगे जब मैं आपको ये जानकारी दूंगा। So the guru cannot spontaneously explain Guru Tattva? तो क्या गुरु स्वयं तुरंत ही आपको गुरु तत्व बता नहीं पा रहे हैं? So shouldn't the guru at least know what is Guru Tattva? तो कम से कम गुरु को तो गुरु तत्व पता होना चाहिए। Shouldn't it be like the prerequisite? तो क्या ये पहली सबसे योग्यता नहीं होनी चाहिए? Shouldn't you know who and what you are to begin with? तो पहले आपको ये जानने की जरूरत है कि आप कौन हैं, क्या हैं, शुरुआत करने के लिए कम से कम। Who am I? Isn't that the question, who am I? तो ये प्रश्न नहीं है कि मैं कौन हूँ। And the guru is like, who am I? कह रहा है कि मैं कौन हूँ?
Right? So everyone's just going to be like, who am I? तो सभी कोई बस What ये am कहते I? हैं मैं कौन हूँ मैं क्या हूँ What's the purpose of your life? What's the purpose of my life? जीवन का क्या उद्देश्य है फिर वो गुरु कहेगा जीवन का क्या उद्देश्य है Like, shouldn't someone have an absolute answer? तो किसी के पास क्या परम उत्तर मौजूद होना चाहिए या नहीं Gurudev, tell me, who am I? Gurudev, मुझे I'm बताइए trying to figure out who am me, who am I? गुरुदेव मुझे बताइए मैं कौन हूँ गुरुदेव कहेंगे कि मुझे पता नहीं मैं खुद पता लगाना मैं I'm कौन हूँ waiting for the newest version of the Shastric Advisory Committee to figure out even who I am. तो मैं शास्त्रीय सलाहकार समिति के सलाह का इंतजार कर रहा हूँ मुझे ये बताने के And लिए whether मैं कौन I'm हूँ bona fide or not. मुझे पता नहीं मैं प्रमाणिक हूँ Last year I was bona fide, but I'm not sure. उसके साथ मैं प्रमाणिक था इस साल मुझे पता नहीं I think some lady got my position. किसी महिला मेरा पद ले लिया Now that GBC said I have to serve this lady and don't be bothered because she, she's a spirit soul, और जीबीसी कह रहा है कि अब आपको इस महिला की सेवा करनी होगी और परेशान मत होइए क्योंकि वो भी जीवात्मा है Don't be so mundane. इतना भौतिक सोच मत रखिए You're so materialistic. ये सब भौतिक है पूरी तरह से I saw one picture of the lady guru, right? They're having a meeting, GBC meeting, and there's all these men that are sitting there, right? She's sitting on the table. तो मैंने एक मुलाकात देखी जीबीसी की मीटिंग हो रही थी और सभी जो जीबीसी के गुरु सदस्य थे वो कुर्सियों में बैठे थे और जो माता जी हैं Talking to all the men devoted. और टेबल के ऊपर चढ़ के वो अपने बाल्टी मार के बैठी थी और सारे रिश्तों से बात कर रही थी This is Vedic culture. क्या ये वैदिक संस्कृति है The lady going to sit on the table in front of all the senior devotees and gurus ये and महिला जो है instruct them. टेबल के ऊपर बैठ के बाल्टी मार के बैठ रही है और सारे पुरुष सदस्यों को निर्देश दे रही है उनको सलाह दे रही है बैठकर She's going to, train all the brahmacharis who just came out of materialistic life. वो उन ब्रह्मचारियों को शिक्षा प्रशिक्षण देने का प्रयास करे जो कुछ दिन पहले ही भौतिक जीवन त्याग कर आए हैं And then like the Mataji, like when she wanted to be the guru, did you ask your husband permission whether you can be a guru? और जब वो माता जी गुरु बनना चाहते थे क्या उन्होंने अपने पति की आज्ञा ली गुरु बनने से पहले Did you get permission from your husband? क्या अपने पति से आज्ञा स्वीकार की This is very controversial. ये बहुत विवादास्पद बात है Because the men are so weak. क्योंकि पुरुष इतने कमजोर हो चुके हैं This is the problem. ये समस्या They're है so weak they have no power, no shakti. इतने कमजोर हो चुके हैं कि कोई शक्ति नहीं Then the ladies, they work like, and they take over the whole temple. और जो है महिलाओं ने पूरे मंदिर पे कब्जा कर लिया In the West, in America, Europe, अमेरिका में even in Russia, right? We went on right now, the ladies are leading the kirtan, they're playing madanga, and the guys are leading. माता जी वहाँ कीर्तन कर रही है और कीर्तन का बजा रही है पुरुष लोग पीछे हिलते हुए जा रहे हैं Ladies are walking, they look like soldiers, walking up the street, और महिलाएं जो रास्ते में नहीं कर रहे हैं bass guitars, सेना के and the guys like, they're following behind the ladies. आगे कुछ लोग माता जी के पीछे पीछे जा रहे हैं Have some respect, man. कुछ सम्मान आत्मसम्मान रखिए कम से कम Have some self-respect. कुछ तो आत्मसम्मान भी होना चाहिए Now they'll put the guys out in the front and they'll start doing they'll start doing all these things. Ladies will be like, all right, look dance over और पुरुष जो है सामने वाली कतार में किस तरह से नाचना चाहिए और महिलाएं भी आपको आगे चाहिए नाचना चाहिए Put on some rainbow colored clothes, कुछ सतरंगी कलर कपड़े पहनो कुछ दम रखिए And then the ladies are like, these guys are in charge here? Are you serious? और महिलाएं कहती ये लोग यहाँ के इंचार्ज हैं क्या It'll take over in a minute. Go wash the pots, man. चलो हम कब्जा करते हैं चलो तुम लोग बर्तन हो Because they're stronger, they're more qualified in many cases. क्योंकि वो ज्यादा मजबूत है और ज्यादा योग्यवान है बहुत सारी परिस्थितियों में
So you kind of like, if they're running everything and doing everything, why shouldn't they be gurus? That's how they feel. तो Isn't it? अगर वो सब कुछ चला रहे हैं, सारा कुछ काम काज वो लोग संभाल रहे हैं, तो उनको गुरु भी होना चाहिए, ऐसा ही वो सोचते हैं। You know, Prabhu, can you give the class? Well, I'm not in nice consciousness. क्या आप क्लास दे सकते हैं? मेरा दिमाग खराब है थोड़ा। My brain's like spaghetti. मेरा दिमाग जो है अभी I don't know what to say. मुझे पता नहीं मुझे क्या बोलना है। So the ladies been doing everything. तो महिलाएं सब कुछ कर रही हैं। This problem. ये समस्या है। They have no strength. इनका कोई शक्ति नहीं। This is very controversial, ये isn't बहुत it? विवादास्पद सब बातें हैं। I almost can't go anywhere in this world right now. अभी विश्व के किसी भी जगह मुझे जाने के लिए नहीं दिया जाएगा। No country, कोई देश नहीं आने देगा। no religious कोई organization, धार्मिक संस्था नहीं, no family, कोई परिवार नहीं, no friends. कोई दोस्त नहीं। I've totally canceled myself. पूरी तरह से मैंने खुद को ही प्रतिबंधित कर But दिया it's है। a cancel society. If one cancels you, I just cancel myself. तो समाज में लोग जो है किसी को प्रतिबंध लगा है, मैंने खुद पे ही प्रतिबंध लगा Now I दिया। can say whatever I want. और अब मैं जो भी कहना चाहूँ मैं वो कह सकता हूँ। Whoever will listen. अब कौन उसको सुनेगा? Well, I was crazy enough to listen to me. कौन इतना पागल होगा जो मुझे सुनना चाहता है? That's why every time I come in, I'm saying, you came back. इसलिए मैं हर बार कहता हूँ जब मैं किसी को देखता हूँ वापस आ जाते हैं, आप वापस आ गए, What's wrong with you? तुम्हारे सब गड़बड़ है। We must be saying something, right? वैसे हम कुछ सही बातें कह रहे हैं। And why are they afraid? If we're so crazy and deviated, why are you afraid? और अगर हम इतने पागल हैं, ऐसे भटके हुए हैं, तो आप हमसे डरते क्यों हैं? Why are they so intimidated? क्यों वो इतना भय खाते हैं? Right? If somebody, people come, they come, we invite them to the class, right? We're not intimidated by these people. अगर कोई हमारे क्लास में आना चाहता है, सुनना चाहता है, हम उनसे कोई भय नहीं खाते हैं। Hey, remember this Maharaj came? He looked pretty good, right? आपको याद है वो महाराज आए, बहुत अच्छे लग रहे थे देखने में। And then I asked him to sit up right up front next to me, you know. और मैंने कहा आप आइए मेरे सीधे सामने बैठिए। And then we asked him to say something. और फिर मैंने कहा कि आप कुछ बताइए। Because he couldn't listen to anything because he needed to say something. कुछ भी सुन नहीं पा रहे थे क्योंकि वो कुछ बोलना चाहते थे। Right, like this crazy guy down there the other day wearing saffron. जैसे वो पागल व्यक्ति जो उस दिन मंगलवार से कह रहा था, कुछ बातें कहना शुरू कर दिया उसने। He gets saffron on, means I get something to say. तो उसने भगवा वस्त्र पहन लिया था, मुझे कुछ तो बात है बोलने के लिए। मैं पंडित हूँ, मैं पंडित बन गया हूँ। This saffron gives me the right to tell you something. अब ये भगवा वस्त्र है, मेरे को मुझे अधिकार दिया है कि मैं आपको So he कह just सकता हूँ। starts talking, he's like a madman on the side of the highway. तो जब बोलना शुरू किया, ऐसा लगा कोई पागल व्यक्ति रोड के किनारे खड़ा होकर बोलता है कुछ। Right, just like the ramblings of a madman. एक पागल मन के बातें हैं। God bless him. भगवान को आशीर्वाद दे। Yeah, this is going to be fun. ये बहुत मजेदार होने वाला है। What do you have to be afraid of? आपको किसी And से then डरने की let him जरूरत है। speak in front of all of our devotees. और हम सारे भक्तों के सामने ये बात करेंगे। And as soon as he starts speaking, right, he just make a fool out of himself. तो जैसे वो सन्यासी महाराज ने बोलना शुरू किया, तो उन्होंने स्वयं की बेवकूफी साबित कर दी। Because he shows he doesn't understand the tattva, he doesn't understand philosophy. क्योंकि उन्होंने दिखा दिया कि उनको तत्व या सिद्धांत पता नहीं। Right, he looks pretty good. देखने में अच्छे लग रहे थे। Right, older devotee, right, nice saffron, right. बूढ़े भक्त अच्छा सैफरन का नाम, Looks kind of senior, और देखने में बहुत वरिष्ठ लग रहे थे। right. Then I gave him a nice big chair, so now he has a chair of respect. तो मैंने उसको अच्छी बड़ी कुर्सी दी ताकि उनको सम्मान मिला थोड़ा। So I had to give him a chance to speak, right? मैंने उनको मौका देना था कुछ बोलने के लिए। And then what's the first thing he's talking about? और सबसे पहली चीज उन्होंने क्या कही? The three F's or something? The How do you guys remember this? आप लोग कितने अच्छे तरीके से याद है। I'm trying to tell them, they don't understand anything. I can't remember what the guys said, you know? मैं इतनी बातें कह रहा हूँ, फिर कुछ भी नहीं समझ पाते हैं। और उन्होंने ये बात कही पूरी अच्छे तरह से बोली। The crazy guy was saying F-F-I-I-N. And I'm here pounding him from months. पागल I आदमी couldn't hear anything. पागल आदमी
FFIL कुछ भी कह दिया और सब याद है मैं इसमें हर दिन थोड़ा मार रहा हूँ हर दिन बता रहा हूँ आज तक समझ नहीं We पाया didn't get this guy back. Listen to his satsang. उस व्यक्ति को हमें वापस लाना होगा उसका सत्संग में चलिए Oh, it was so crazy, I just blocked it out. It never entered my ear. मेरे कान में मैंने कभी घुसने नहीं दिया उसको I was like, oh, another crazy guy. देखो और एक पागल आदमी है I don't know what he's talking about. ये पता नहीं क्या बात This कर रहे is just a stream of mental speculation. हैं उनके मनोधर्म का कुछ धारा प्रमाण No guru sadhu shastra. कोई गुरु साधु शास्त्र No नहीं philosophy. कोई तत्व नहीं कोई सिद्धांत नहीं So what does it mean? Since you're so much accurate at hearing. तो इसका मतलब क्या था कि मैं कैसे तरीके से What श्रवण is it? किया Fire, life, existence. Life. You guys should find तो मैं कैसे जाना आपको ढूंढ के लाइए Krishna will direct you. Give you intelligence and faith where to go. कृष्ण आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं आपको बुद्धि श्रद्धा दे रहे हैं कहाँ जाना चाहिए Good luck. शुभकामनाएं आपको Wish you the best. बहुत शुभकामनाएं So were you persuaded by all of those lessons? तो आप उन शब्दों से प्रभावित हैं What was his ultimate philosophical point? Stay brahmachari. Stay brahmachari? उनका अंतिम That सिद्धांत was क्या his था final thing? कहना चाहते तो ब्रह्मचारी बने रहिए What an inspiration. He is totally inspired me, man. पूरी तरह से प्रेरित कर रहे थे वो Then he was mad at me after that. बाद में हम मुझसे पागल हो गए I didn't show him enough respect. उनको सही सम्मान नहीं दिया You said like you'd like to try and get the. You'd like to try and. And he was like. That's how it came out. I said, Mom, you want to try to say something? मैंने महाराज से कहा महाराज आप भी कुछ बोलने का प्रयास करना चाहते हैं मैं प्रयास करूंगा I'm just remembering I said that. मुझे याद आ गया मैं ये बात तो कही थी That's horrible. कितना भयानक बात है Maharaj, you want to try to say something? महाराज आप बोलने का प्रयास करना चाहते हैं I already knew what was going to happen. You know what I मुझे mean? पता था क्या होने वाला है That's why I just set him up. You want to try to say something? इसलिए मैंने उनको पूरे जाल में फंसाया आप कुछ कहने का प्रयास करना चाहते हैं And then out of anything that he could have said, he said the most crazy thing. सबसे चीजों में वो सबसे पागलपन वाली चीज उन्होंने बताई Then I said, you want to try to say something? मैंने कहा कुछ बोलने का प्रयास करना And चाहिए he tried to say मैंने something. कुछ बोलने का प्रयास किया And only a couple of his shishas heard it. उनके कुछ शिष्यों ने श्रवण किया Everybody else blocked it out. बाकी सब लोगों ने पूरी तरह से बंद कर दिया उनका But he's got a good memory, so he remembered that. लेकिन कोई याददाश्त अच्छी है तो पता भी याद है I'm spending a couple of months trying to purify him, कितने महीने लगे मुझे उनको शुद्ध करने के लिए इस बात से just so he can get some peace of mind. की शांति मिल सके Because he wants to be the guru. क्योंकि वो गुरु बनना चाहते हैं They're looking for disciples. वो शिष्य को ढूंढ रहे हैं So for me, it's great because the ones I don't really want, maybe they'll follow me. मेरे लिए बहुत अच्छा है जो यहाँ नहीं रहना चाहते हो सकता शायद उनके पीछे चले जाएं This would be great if you can take a few out. बहुत अच्छा होगा कुछ यहाँ से बाहर कर रहे हो बहुत अच्छा होगा मेरे लिए F.I. And they become cheerleaders for the Maharaj, you know? फिर आप लोग जो है cheerleader बन सकते हैं Then you put them out in front of the Maharaj. फिर उस सबको महाराज के सामने ऐसे नचवाएंगे And then all these fools are like, wow, I gotta join spiritual life. कुछ और बेवकूफ जो देखेंगे कि मुझे अभ्यास जो अभ्यास करना I चाहिए gotta get me one of those spiritual ladies, you know? इस तरह की आध्यात्मिक महिला से मिलना चाहिए
secret weapon, you know. एक खुफिया हथियार है. They're trying to pick up, people who want pure devotional service. ऐसे लोगों को चुनने का प्रयास करें जो शुद्ध भक्ति करना चाहते हैं. It's like get them in the house, just somehow get them in the house. Prabhupada built the house in which the whole world can live. इस तरह से लोग घर के अंदर रहते हैं. घर का ऐसे घर को बनाया है आप विश्वास करें. Once they're in the house, we try to purify them. एक बार जब घर के अंदर आएंगे हम शुद्ध करने का प्रयास करेंगे. You see how much trouble they're in? This is their whole strategy. ये इनका पूरा जाल है. So just get them into the bridge program. इनको किसी तरह से ब्रिज प्रोग्राम में लेकर आइए. We're not asking you to be real devotees. हम आपको शुद्ध भक्त करने बनने के लिए नहीं कह रहे. And if you just enter the bridge program, we'll marry you to one of these girls. अगर आप ब्रिज प्रोग्राम में आएंगे तो हम इनमें से किसी एक महिला के साथ आपकी शादी कराएंगे. Then gradually, और धीरे-धीरे life after life, जन्म के बाद then one day you'll surrender एक दिन आप शरणागत करेंगे and stop doing pranayam, और प्राणायाम करना बंद करेंगे and then you'll get prem bhakti. और तब आपको प्रेम भक्ति मिलेगा. Did I misunderstand something? क्या मैं कुछ गलत समझ रहा Now हूँ? they have a different program? क्या Oh, वो psychology. कार्यक्रम है वो मनोविज्ञान. This is बहुत बुरा है. This is like Vedic culture. ये वैदिक संस्कृति है. I remember I was in the Boston temple and I was taking darshan of Radha Gopi Vallabha. मुझे याद है मैं बॉस्टन के मंदिर में राधा गोपी वल्लभ का दर्शन दे And रहा this big lady, था और एक बड़ी महिला आई. I was right in the front. मैं एकदम सामने And खड़ा she था. came up and she just went right in front of me. So she was just standing right. तो मेरे सामने आई, मेरे आगे लोग खड़ी हो गई. मैं केवल उनको ही देख पा रहा She was like bigger than me, था. मुझसे भी बड़ी थी वो महिला. So she was blocking the sun, उसने सूरज को खड़ा किया अपने सामने. And I'm just looking at the back of this lady's head. और ये माता जी मुझे बस And I'm पीछे just में खड़ा हूँ. like, whatever happened to the Vedic culture? फिर मैं कह रहा था वैदिक संस्कृति को क्या हो गया था. Where did we go wrong, कहाँ हमने गलती कर दी. And then I couldn't help myself. I just said, Mataji, I said, Mataji, you should stand in the back. She just lost it. I said, Mataji is Vedic culture, you should literally stand in the back. और मैंने आपको रोक नहीं किया. मैंने कहा माता जी वैदिक संस्कृति का मतलब है आपको पीछे जाके खड़ा रहना चाहिए. And then this other lady, another, guru, lady guru started screaming at me. और फिर जो एक महिला गुरु मुझ पे चिल्लाना शुरू कर दिया उन्होंने. And I started chastising, go to your husband. Just go to your husband. मैंने उसको भी डांटा अपने पति के पास जाओ. I'm just dismissing the lady guru, go to your husband. महिला गुरु को खारिज ही कर दिया. अपने पति के पास जाओ. So we had a whole army of ladies trying to kick me out of that temple. पूरी महिलाओं की सेना आगे मुझे मंदिर से बाहर निकालने के लिए. Yeah, there's a whole conspiracy, पूरा विवाद खड़ा हो गया वहाँ. You heard of the Black Panthers? ब्लैक पैंथर के बारे में सुना है? There's a Mataji brigade, माता जी ब्रिगेड खड़ा हो रहा था वहाँ. I was not surrendered. मैं शरणागत नहीं था उनको. Krishna culture, Vedic culture is Krishna culture. वैदिक संस्कृति कृष्णा की संस्कृति है. Right? It's saying you have to be humble. Everyone has to be humble. सभी को विनम्र रहने की जरूरत है बताया गया. And everyone has some role to play and some service to do. और सभी का कोई कार्य है और भूमिका है और कोई सेवा है. And if it's all for the pleasure of Guru and Krishna, it's all absolute. और ये सभी गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए और सभी परम स्तर में है. So on transcendental spiritual platform, isn't it? तो दिव्य आध्यात्मिक स्तर पे किसी भी So कोई it's खेल real नहीं है. consideration. ये सब केवल भगवती के विचार हैं. And then the gurus are pushing that. और गुरु इनका समर्थन कर रहे हैं. They're not saying, no, this is not correct. वो नहीं कह रहे कि सही नहीं है. They're saying if you say anything against it, then you're the offender. वो कह रहे हैं अगर आप इसके खिलाफ में कुछ कहेंगे तो आप एक अपराधी हैं. क्या करें आप?
Brahmachari, yes, going to take some lady as his guru. क्या ब्रह्मचारी किसी महिला को अपने गुरु के रूप में चुनेंगे? Doesn't that seem odd? क्या ये सुनने में थोड़ी विचित्र बात नहीं लगती? Not in America, I guess. But yeah. अमेरिका या यूरोप में विचित्र बात नहीं है. And then they say, well, there's cultural considerations. और फिर वो कहते हैं ये सब संस्कृति का मतभेद है. You're bringing in material cultural considerations. आप इस भौतिक संस्कृति का दृष्टिकोण लेकर आने. It means Maya. इसका मतलब ये माया. So how you establish the absolute truth? तो कैसे आप परम सत्य को स्थापित करें? I remember one person said to my guru, well, Gurudev, we're Western ladies. मेरे गुरुदेव ने एक बार कहा, मेरे गुरुदेव एक बार किसी भक्त ने आकर कहा, गुरुदेव, हम पश्चिमी देश के भक्त हैं. Gurudev is so on fire, you know. तो गुरुदेव इसी तरह से आग में उड़ा हुआ है. Western lady, Eastern lady, this is nonsense, you know. ये क्या विदेशी महिला और देशी महिला ये सब फालतू बातें. They're talking on the soul platform, Western lady, Eastern lady, you know. Nonsense. Why are you bothering me? क्या देशी महिला विदेशी महिला ये सब फालतू बातें हैं मुझे परेशान Such a छोड़. low consciousness. ऐसे नीचे की Misunderstanding everything. Western lady, Eastern lady. सभी चीजें गलत समझ रहे हैं. विदेशी महिला और देशी महिला. How do I get out of this conversation? हम इस चर्चा में कैसे पहुंचेंगे? I always end up looking for an off ramp. You know? मैं हमेशा ढूंढता हूँ कैसे हम How do I save myself से बाहर from this निकल highway? सकते हैं. You know? कैसे मैं जो हाईवे जा रही है इससे कैसे मैं Now the सुरक्षित car तरीके से is नीचे आ सकूं. moving really fast. हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे. Right? People are flying off of the bridge. You know? लोग जो है पुल से उड़ते हुए गिर They're रहे हैं. looking for an off ramp. अब हम नीचे उतरने के लिए हाईवे से उतरने के लिए रास्ता ढूंढ रहे हैं सुरक्षित. Any final questions? कोई अंतिम प्रश्न Of once? या बात? Bishop? What do you think? आप क्या सोचते हैं? Nothing? कुछ भी नहीं. Okay. ठीक है. Yes. She wants to be a guru. वो एक गुरु बनना चाहती है. She's telling the husband what to do. और अपने पति को बता दें क्या करना है. Yes, yes, dear. Yes, honey. वो कहते हैं हाँ हाँ. Whatever you want, yes. जो भी तुम चाहो हाँ. And then the guru tells him, and he's like, well, I'll get back to you, Gurudev. अच्छा गुरुदेव कुछ कहते हैं गुरुदेव मैं आपकी बात थोड़ी बाद में सुनूंगा. I got to ask my wife about it first. मुझे अपनी पत्नी को पूछना पड़ेगा पहले. Shastric Advisory Committee. शास्त्रीय सलाहकार समिति है. Is it absolute? क्या ये परम सत्य है? Hare Krishna. So, Alexa got some mercy tonight. ऐसे कुछ अंतिम बातें याद किया. That's good. ये अच्छी बात है. Srila Gurudev, thank you very much for this so powerful Krishna-katha, and I feel that every day my heart becomes more and more purified. Your husband's getting more. पति और शुद्ध होते हैं. Your husband's getting more. उसके पति और शुद्ध होते जाते हैं. My heart becomes more purified. Oh, I thought you said your husband. कहीं मेरा हृदय शुद्ध हो रहा है. मुझे लगा वो कहीं मेरा पति शुद्ध हो Because रहा है. he's praying for power of tolerance, so he's getting more and more purified. तो वो शुद्ध सहन शक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो और शुद्ध होते जा रहे हैं. I'm a little deaf, so sometimes I just थोड़ा बहना होता है. मैं कई बार थोड़ा गलत समझ बैठता हूँ. And also the desire to surrender more, to fully surrender, is grown every day more and more. one day at a time. मेरी सरदारी करने की इच्छा और बढ़ती होती जा रही है. One day at a time. एक दिन में एक कदम. Did. Judder. Okay, everyone, thank you very much. धन्यवाद सभी का. I know devotees have to leave early मुझे पता है tomorrow, कल भक्तों को सुबह जाना है जल्दी. so I'm happy we discussed many nice topics with you. तो मैं बहुत खुश हूँ कि बहुत अच्छे विषय पर चर्चा कर पाए हैं. And we finished up with some also really nice absolute consideration topics. और हमने अंतिम किया कुछ अच्छे तत्व विचार विषयों को I विचार. hope you got the much benefit. मुझे उम्मीद है आप लोगों को भी काफी लाभ मिला होगा. I thought it was
gunshots. मुझे लगा गोलियां चल रही हैं I'm looking for the blood stain. देखने लगा कि मुझे कहीं गोली कहाँ लगी है Alright, I didn't get shot. Some lady comes in. मजा अंदर घुस के गोलियां चला How's this for female guru? कैसा रहा ये महिला गुरु की तरफ से At least we can laugh about it. ऐसे में इसके बारे में हंस पा रहे हैं Some people can't laugh about it. कुछ लोग इसके बारे में हंस नहीं पा रहे This is like, it's like a total meditation. पूरा ध्यान खींच लिया जाता है All right, I'm going to go in my room and need protection right now. मुझे सुरक्षा चाहिए अभी I got like 3 locks, big sticks. 3 ताले लगाऊंगा Yeah, I've been like that at different temples. मेरे ऐसा भी मान लगा 3 4 ताले लगाए That's not exactly a good sign that you're getting, satsanga. आपको अब सत्संग मिलने वाला है या क्या मिलने वाला है Usually like 1 small lock is enough. बहुत ऐसा सामान्य You're से एक like छोटा strapping ताला the door locked. It's not like, I'm protecting myself from satsanga. दरवाजे वैसे बंद करने का प्रयास करें सत्संग से बचाने के लिए Gunda sangha. से बचाने के लिए Prabhu, I'm just trying to get some Gunda sangha. They get so mad at me. लोग मुझसे कभी बात सुनते हैं गुस्सा संग की बात मुझसे इतने गुस्सा होते हैं Satsanga. I'm sorry. ओह मैं सत्संग कहने वाला था मुझे क्षमा कीजिएगा I'm just joking with you. मैं केवल आपके साथ मजाक कर रहा हूँ Don't kill me right now. मुझे मत मारिए अभी So everyone, thank you very much. धन्यवाद सभी का Where's going to come? Painting. Tomorrow. Alright. I noticed they weren't here. तो मैंने देखा पौर्णिता आज मौजूद नहीं है I was going to say, Shri Guru Garanga ki, Jagannath Baladev Devi Subhadra Devi ki, Jai Prabhupada ki, Jai Govinda Swami Shalabhadra ki, Someday the Bhakti Vrinda ki. Thank you everyone. Safe travels tomorrow. सुरक्षित यात्रा कीजिए We'll see you soon. आपसे जल्दी मिलेंगे Prashad? All right, let's do it. चलिए बहुत धन्यवाद You ready? Now he's awake. आगे The whole class.